So, as I have told you in the orientation class, what will be the pattern of this answer writing batch? Author सेटा टिके recap कर दोची. Then we will start with today's class. आरो maximum लाभटा नबा पई जो शेड्यूल टा आपन को दिया है वीकली शेड्यूल तो आपन टिके प्रिपेयर करिके आसीबे. ओके ताहले ही जाई कि आपन मैक्सिमम आरो लाभटा दे परिबे. So what will happen here, we will discuss some important questions related to the exam. परीक्षा रे जो क्वेश्चन टा पढ़ी पारे किंबा ऑलरेडी पढ़ीची. ओके एंड सम अदर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एटलीस्ट दीटा क्वेश्चन मु आपन को सेटा गोटे असाइनमेंट टाइप रो देबी. ओके जोटा कि आपन रिसर्च करिया पड़ियो रेडीली से क्वेश्चन रो आंसर टा अवेलेबल न होई पारे जोटा हमें काली क्लास रो स्टार्टिंग में फर्स्ट डिस्कस करिके स्टार्ट करिबा. ओके मेनी ऑफ यू आर आस्किंग अबाउट द पीडीएफ्स. तो एक्सक्यूज मी ए जो फाइल्स गुडा अछि ओके दैट इन पीडीएफ फॉर्म इन ए सिंगल गूगल ड्राइव लिंक सेटा आपण ग्रुप रे मु दे देबी. तो सेउ थ्रू आपण एक्सेस करि परिबे. ओके दैट मींस सेम लिंक विल बी देयर आपण ताको डाउनलोड करि परिबे. एवरी क्लास पर से लिंक टा अपडेट हे जोतिबो सेम लिंक टा. ओके एटा इंटीग्रेटेड बैच स्टूडेंट्स को पई और स्पेसिफिकली जो माने बैच रे जॉइन करचंती से मानो को पई एटा रहइबो. ओके सो बट जदि आपण अनप्रिपेयर्ड आसुचंती ताले सेतरे आपण को विल बिकॉज़ एथरे इंपोर्टेंट जिंस दीटा एस्पेक्ट अछि. गोटे हला कि तारो डिस्कशन कंपोनेंट ता और तापरे लाइव आंसर राइटिंग ता. तो 1.5 आवर जो हमें रखुछु सेथरे दीटा इंपोर्टेंट कंपोनेंट आपण को रहउची. फर्स्ट वी डिस्कस ओके एग्जाम स्पेसिफिक थिंग्स पॉइंट वाइज हमें ताको डिस्कस करबा. आउ सेकंड जिंस हला कि ता भितरु एटलीस्ट गोटे कि दीटा क्वेश्चन हमें लिखिबा. ओके वी विल राइट द आंसर्स एंड जो माने पारुचंती एबे सबमिट करिवे जो माने न पारुचंती सकाळे कि जेतोळे आपण लिखुचंती सबमिट करिवे. जदि जहा सबमिट करिवे गोटे पीडीएफ फाइल रे सबमिट करिवे. सिंगल पीडीएफ फाइल तो 4-5 टा पेज अछि. सिंगल पीडीएफ फाइल तक करिकि सबमिट करिवे. आउ खाता ऊपर आपनकर नाटा लिखिथिबे. ओके फाइन. सो लेट अस स्टार्ट देन. आजिरो हमर सिलेबस रे थिला इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स आउ रिवोल्ट ऑफ 1857. ओके सो लेट अस स्टार्ट देन विथ दैट. रिवोल्ट ऑफ 1857 फर्स्ट क्वेश्चन आसिला इकोनॉमिक कॉजेस ऑफ द रिवोल्ट. तो ए जो पैटर्न टा अछि हमर एबे जो 150 और 250 वर्ड्स रो रहउची हम सेही हिसाब रे आपनकर अरेंजमेंट भी सही पैटर्न हिसाब रे ही हेची. ओके जेति कि हमें सेति कि ता भितरे लिखि पारिबा. ठीक अछि. सो फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव टू राइट. तो एमति ना कि 3 पेज आपनको मॉडल आंसर मिलियो जोतरे कि किंतु आपनो लिखिबार एक्चुअली अछि जेति कि 150 वर्ड्स कि 250 वर्ड्स we will stick to that. Okay and we will have some basic discussion. So first asila economic causes of revolt of 1857. Assuming that all of you have studied and come, you can participate and you can tell me one points. Okay then we will have a overall discussion model answer college. So yeah, anyone who can start, you can give 1 or 2 points or any number of points that you know. Okay yes, someone who can start. तो गोटे ओवरऑल व्यू तो आपण जानि चंती इकोनॉमिक ओके कॉजेस कौन थिला रिवोल्ट ऑफ 1857 रो. तो बिफोर द ब्रिटिश केम ओके द विलेज इकोनॉमी जोटा हमर थिला सेटा फ्लरिशिंग इकोनॉमी थिला. सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल रे थिला. ओके इट वाज मेनली ड्रिवन बाय द रिक्वायरमेंट ऑफ द ओन कम्युनिटी. सेटी कम्युनिटी रो जो रिक्वायरमेंट थिला से हिसाब रे प्रोडक्शन होतिला. ओके एग्रीकल्चरिस्ट जे फार्मर जे से सेति की प्रोड्यूस करतिला जोटा ता कम्युनिटी की दरकार ता विलेज को दरकार. ओके सेमती बिकिया पई तारो मेन इंटेंशन नथिला. ठीक सेमती जो माने वर्क्समैन थिले ओके ब्लैक स्मिथ्स थिले जो माने टेक्सटाइल्स बनौथिले से माने सब सही प्रिंसिपल रे काम करथिले. राइट. सो एज अ रिजल्ट ताको भाई पैसा भी ठीक ठाक थिला. ओके एंड इट वाज अ काइंड ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी. एमन जेतले आसिले दे स्टार्टेड ब्रेकिंग दैट ओके by various methods. So let us start the discussion. Okay so you can unmute your mics and participate. Like we can't adi amara we are going to discuss sabu dino bi 10 to 12 questions amara rahibo. Okay so aji amara basically including your current affairs 12 ta question achi and we have 2 questions for your assignment joda kali apan kariki okay ready rahibar achi. So we cannot बहुत समय पर्यंत हमें गोटे क्वेश्चन ऊपर बसी परिबानी बिकॉज हाफ एन आवर वी विल डिवोट फॉर लाइव राइटिंग. ठीक है. सो प्लीज स्टार्ट द डिस्कशन. आई होप यू हैव स्टडीड एंड कम इकोनॉमिक कॉजेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857. ओके ऑलरेडी मु बेसिक ता आपन को कहि देली कि डिस्ट्रक्शन
of the traditional industries. Okay, next you can start. Anyone? The high rate of taxation. Yes, high rate of taxation, and also that taxation was biased taxation. For example, they would not tax or make it tax free or less tax, or rather sometimes they would give subsidy to the things which are imported from their country into India. So तांकर businessmen मानकु तांकर artisans मानकु से माने आउरी promote करूथिले so that they can bring their products and sell in India. आमर जो जहाँ जति कम भी इंडस्ट्रियलिस्ट थिले आउ जो आमर ट्रेडिशनल आर्टिसंस माने थिले तांको काम ऊपर से माने अधिका टैक्सेशन दोथिले. करेक्ट. नेक्स्ट, एनीवन एल्स? नेक्स्ट पॉइंट कोंतु. Yeah, please go ahead. कोंतु. Sir, permanent settlement of Bengal, Bihar, Odisha, Undivided Bengal, did not recognize the heritage right of peasants. Okay, ताको आउट के जनरलाइज कर दवा कि exploitative land revenue system. ठीक अछि, exploitative land revenue system. देखो आगुरु हमर पैटर्न कोन थिला जेतेबेले लाइक हम टिके अधिका we have to finish, you are getting 20 questions. Okay, जदि हमें धरिबा कि लास्ट ईयर रो पैटर्न ता जेमति रहला तो 10 मार्क क्वेश्चन पे मते 6 मिनिट मिलिबो आउ 20 मार्क क्वेश्चन पे मते 12 मिनिट मिलिबो. ठीक अछि. नॉर्मली मु जदि माने स्टैंडर्ड जे प्रिपरेशन करिछि ठीक ठाक से 5 रु 6 मिनिट भीतर गोटे A4 साइज पेज रे लिखि परिबो. ओपीएससी जेमति हमर पेपर दोछ त माने मु 20 मार्कर पई अराउंड 2 पेजेस ओके जाय कि 2.5 पेज जदि बहुत बड़ हैंड राइटिंग मोर तले 2.5 पेज लिखि पारि. पेज मोर इंपोर्टेंट नो, सब पॉइंट्स कवर हेतिबा दरकार. ओके, सो यस दैट पॉइंट इज आल्सो करेक्ट. तापर नेक्स्ट, एनीवन एल्स? So we can also add the point regarding the discrimination of the East Indian Company among the Indian officials or the soldiers, along with comparison with the Britishers or the European soldiers, that they can or the salary related, Indians were receiving the less salary, and other bhatta related, and the rank related also. Indians cannot go past this Subedar rank, whereas these European soldiers can easily achieve the higher rankings. Okay, that is a valid point. किंतु एठी एक्चुअली क्वेश्चन हमर कोन थिला, स्पेसिफिक क्वेश्चन हमर अछि एटा इकोनॉमिक कॉज. अपन जोटा कहले पूरा ठीक सेटा पर क्वेश्चन रे अछि जोटा कि हला मिलिटरी कॉज. ठीक अछि, मिलिटरी कॉज की व्हिच आर रिलेटेड टू सोल्जर्स, डिसकंटेंट अमंग द सोल्जर्स. एई क्वेश्चन रे से स्पेसिफिकली इकोनॉमिक कॉजेस ऊपर पहुंच. Okay, but the point then you made, in economic points, can we use the term of Rehatwari, Mahalwari and Zamindari, where there are a lot of discriminations going on? yes, से जिनसटा हम जस्ट डिस्कस करलु ताको जनरलाइज करिया पे एक्सप्लॉइटेटिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम से माने फॉलो करतले. ओके, आ गोटे मेजर चेंज जोटा से माने कले सेटा कोन, आगुरु लैंड रेवेन्यूटा केमति कलेक्ट होतला. इट वाज कलेक्टेड इन काइंड, नॉट इन कैश. ओके, ए माने कोन कले ये ताको कैश को आनरे. राइट, त माने आगुरु कोन होतला से जेते भी हो, लेट्स से 1/3 थिला आपनकर, लेट्स से 1/3 थिला आपनकर लैंड रेवेन्यू. ओके, तो जदी 10 केजी से प्रोड्यूस कला, ओके, तो से 3 केजी ओके दे दउतला तो जाको ताको दबा कदा. राइट, सो दैट वाज द कांसेप्ट. एबे किंतु ताको से 3 केजी नबार नाही ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ताको पैसा दरकार. ओके, तो खजनाटा दरकार, रेवेन्यूटा इन कैश दरकार. कुछ बोले एटा वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम सेटा हला. ता माने कोन, एबे ताको बिकिया पे पड़ियो, फार्मर को से प्रोड्यूस ताको बिकिया पे पड़ियो. सो दिस मिडलमैन ये से समस्त इन्वॉल्व होबा स्टार्ट हे गले. राइट, इवन till the fag end of the Mughal Empire, they were collecting the revenue in kind. Although kichita jagare, okay, some regional empires had already started cash collection. Okay, yes, someone has raised the hand. Hand raise kichi kariba darkar nahi. Unmute yourself and you can ask your doubt or you can add your point. Okay, so upon you yes. Good evening, sir. Sir, one of the major economic causes during the revolt of 1857 was
Sir, the exports of cotton and silk of locals were practically came to end, which ultimately ended their what I can say employment. So this was acted as an outbreak for one of the reason for the outbreak of the revolt of 1857. Yes, that is correct. Okay, ଆପଣ ଦେଖିବେ, can you name that exact term? ତାର ଗୋଟେ particular term ଅଛି ସେଟା ତାକୁ describe କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ବେଙ୍ଗଲର ଯୋଉ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଥିଲା କଟନ ଟା, ଓକେ, ସେଇଟା world ରେ one of the most sought after ଥିଲା। ଓକେ, ଏମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମ୍ୟାନଚେଷ୍ଟର କୁ ସେଇ ଜାଗାଟା ଦବା ପାଇଁ। So ସେମାନେ in fact there were some very restrictive policies they put on the Bengal cotton। ଠିକ ଅଛି, and it was not limited to cotton, other textiles also। Okay, that is correct। Yes, anyone else? ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ PDF ଟା ମିଳିବ, you see the examples। Okay, ସେମିତି ତ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି, ବଟ୍ ଆମେ ତ ଦେଇପାରିବାନି, ଆମକୁ 6 ମିନିଟରେ this is a 150 word answer। ଠିକ ଅଛି, 10 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଏଇଟା। ସୋ ସେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲା, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, in our the storm center of the revolt 21 talukdars had their estate confiscated and suddenly found themselves without a source of income, unable to work, ashamed to beg and condemned to penury। unable to work, ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ଫିଜିକାଲ କାମ କରିବାର, ashamed to beg, ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପୋଜିସନ ରେ ଥିଲେ, ଏବେ ଭିକ ମାଗି ପାରିବେନି। ଓକେ, ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପଳେଇଲା, ରାଇଟ୍? ସୋ these examples, okay, that will add to your answer। ବୁଝିପାରିଲେ? anyone else? last 1 or 2 points we'll take and we'll move on to the next question। Yeah, Sir, can we add the indigo part, or it is other question? इंडिगो रिवोल्ट आपणकर से पॉपुलर अपराइजिंग्स अछि बोधे, आई थिंक नेक्स्ट क्लास रे अछि बोधे सेटा पॉपुलर अपराइजिंग्स। हां, सेतरे आपणकर आसीबो आपणकर पेजेंट रिवोल्ट्स। ओके, आपणकर रिवोल्ट्स ऑफ द ट्राइबल्स। ओके, ट्राइबल रिवोल्ट्स हला एंड रिवोल्ट ऑफ द कॉमन पीपल, सेगुडा सबु एथरे आपणकर आसीबो, राइट? सर तमने इंडिगो रिवोल्ट 1857 रो अलगा 1857 रो इकोनॉमिक रीजंस भितरे, ओके, हमकु मेनली ए पॉइंट्स गुडा दबार अछि। ओके, दे सेमाने एग्रीकल्चर को केमते एक्सप्लॉइट कले किंबा फार्मर्स को केमते एक्सप्लॉइट कले, ठीक अछि, तारो इन वेरियस वे दे एक्सप्लॉइटेड इट, राइट? तो सर लैंड जेमति कि मु कहतली कि जेमति ऐड करतांते से ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को छाडी आपण जेमति कहले, तो से माने कैश क्रॉप को अधिक गुरुत्व दोतले। हां, दैट ता यू भीतर कैन इंडिगो गोटे पॉइंट दैट यू कैन ऐड। ओके, हमकु 6 मिनिट्स रे लिखिबार अछि, सेटा माइंड रे रखन, बिकॉज़ हम पाके बहुत पॉइंट्स अछि लिखिया पे। कथाटा हला हमकु प्रैक्टिस एमति करियार अछि, किंतु एग्जाम रे हम लिखि पारि। ओके, सो दिस इज अ 10 मार्कर, एटा 6 मिनिट रे अपन लिखिबार अछि। ओके, फाइन, बुझि पारले ए जे जिंसटा। सो वंस यू गेट द पीडीएफ यस सर आफ्टर द क्लास, मो लिंक टा दे देबी, गूगल ड्राइव लिंक टा। ओके, तो सेथरु आपण, सो दिस बेसिकली आर एक्सेस अछि हमरो जेते सब इंटीग्रेटेड बैच स्टूडेंट्स अछंती, आउ जो माने स्पेसिफिकली ए बैच पे जॉइन करछंती से मानकर रहउछ, राइट? सो यू कैन डाउनलोड इट एंड यू कैन कीप इट। ओके, तो से डिफरेंट तार ये रहइबनी, गोटे ही लिंक रे सेटा अपडेट होतिबो। नाउ लेट अस कम टू द सेकंड वन, बिकॉज़ यू हैव टू कंप्लीट 12 क्वेश्चंस। सेटा इंपोर्टेंट नो, हमरो 60 मिनिट्स रे डिस्कशन and most important part 30 minutes we will write। Okay, so next come to question 2, discuss the political and administrative causes of revolt of 1857। ठीक अछि, एटा भी 10 मार्क क्वेश्चन ता माने 6 मिनिट रे मत लिखिबार अछि। ओके, दीटा जिंस मते एतरे लिखिबार अछि, पॉलिटिकल रीजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, राइट? So let us say political reasons, anyone can start with that। सर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स yes, सबुटु दीटा बड़ प्रॉब्लम हला सब्सिडियरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, गोटे गोटे लाइन रे ताको बुझे दे परिबे। ओके, सब्सिडियरी अलायंस को एठी सेटा देइनी, बट यू कैन राइट व्हाट इज सब्सिडियरी अलायंस, व्हाई इट वाज। ओके, ताको कोन पई से माने रिजेंट करथिले, स्पेशली द नेटिव सर रूलर्स। एटी हमें ओडिसा रे एग्जांपल संबलपुर भी दे परिया। yes, जेते ओडिसा रे एग्जांपल्स देबे सेथरे भलो। ओके, सो हाउ द चौहान डायनेस्टी ऑफ संबलपुर वाज अफेक्टेड बाय इट, सेटा आपण दे परिबे, बट द थिंग इज दैट अगेन 6 मिनिट्स से मुझा लिख परिबे। ओके, तापरे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तारो भी एग्जांपल्स दे परिबे, ओडिसा रे एग्जांपल देले, बाहर एग्जांपल देले, ठीक अछि। सेटा गोटे गला सब्सिडियरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तापरे आउ कोन? सर Sir, ban आउ आई थिंक नवाब ऑफ औध
अवध रे सेठी माल एडमिनिस्ट्रेशन ପାଇଁ ତାକୁ ଆନେକ୍ସ କରାଯାଇଥିଲା। Yes, maladministration ପାଇଁ अवध रे ओके आउ सेटा अवध became one of the major centers जोटी की हमें देखिबा reasons for failure रे कि लोकंकर कॉमन लोकंकर एते सपोर्ट नथिला। अवध वाज वन ऑफ द प्लेसेस जोटी कॉमन लोक भी सपोर्ट कले काहे कि ना बेगम हजरत महल ओपनली कहले कि तांको हेल्प करो माने जो माने म्यूटिनियर्स अछंती ओके तांको हेल्प करो बुझि पाले तो अदरवाइज लोकल सपोर्ट सेमती तांको बाकी बहुत जगह रे मिललन। आउ जने कोन कहउतले कोंतो Sir, there was a ban on pension, sir. एडमिनिस्ट्रेटिव Pension. रीजन हां Yes, यस sir. करेक्ट Ban on pension, sir. एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस रे अपन ताको लिखि परिबे। ओके नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट पॉलिटिकल तो पॉलिटिकल दीटा मेन हला सब्सिडियरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ओके ता परे आउ कोन ऐड करि परिबा पॉलिटिकल कॉजेस रे। ओके देन कम टू एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस ओके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस से कोन ऐड कर परिबा। This यस it is empty dechi petty corruption lower level rate basically okay and not only in the administrative setup in the judicial setup also okay so that was like the regular day to day higher level corruption to see olga okay higher level corruption that was different but lower day to day level re jo loko mananku without giving money kamo karibata difficult he gala okay yeah anything else that you would like to add administrative causes right Among the soldiers, they treated Indians as inferior. okay interference of East India Company In was what? was disliked by Huh. many Indian rulers. yes सेटा पॉलिटिकल रीजंस रे काई की डिसलाइक काई ना सेमाने बहुत गुडे प्रॉमिस करथिले सेटा से प्रॉमिस रखिले नंबर 1 सेकंड सेमाने तांको एक्सपेंशन करिवा पई एमानंकु आंकर पावर सुडा बेसिकली नै गले सेटा सेमाने इमीडिएटली जानि परलेनी नेटिव रूलर्स माने परे एतल जानले तो तांकर भी आंको प्रति एते भलो किछि ओके संपर्क रहिलानी टू ए लार्ज एक्सटेंट सेटा हमें देखिबा जेतेबेले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 हैला तापरे प्राय से आगुरु जो सिचुएशन थिला सेटा मेंटेन करिया पे से माने ओके किछि स्टेप्स नेले द ब्रिटिश गवर्नमेंट द क्राउन इन दैट केस राइट सो इटा भी 10 मार्क क्वेश्चन ता माने 6 मिनिट्स से लिखिबे एटा माइंड रे पसे दियंतु 6 मिनिट रे सारिवार अछि 6 मिनिट्स 10 मार्क क्वेश्चन ता द 6 मिनिट रे सारिवार अछि ओके हां you can just ask okay just a minute abolition of signs and symbols of faith did not sit well with Indian soldiers okay signs and symbols of faith एगुडा आसी जिवो आपनकर कोन रिलीजियस रीजंस जोटा कि थर्ड क्वेश्चन हमें से थर्ड देखिबा ओके सो थर्ड क्वेश्चन कोची सोशल रिलीजियस एंड मिलिटरी कॉजेस ओके सोशल रिलीजियस एंड मिलिटरी कॉजेस सो दिस इज बेसिकली एटा तीनटा कॉजेस आपनको लिखिबार अछि तो दिस इज ए अपन 12 मिनट पे लिख परिबे इट इज ए 20 मार्क क्वेश्चन ओके सो लेट अस स्टार्ट विथ सोशल रिलीजियस कॉजेस तो जनरली जानछन से माने जहाँ इम्प्रूवमेंट करिया पे चेष्टा करथले निज लाभ पई लेट्स से रेलवे हे गला ओके कि टेलीग्राफ हे गला कि से मॉडर्नाइजेशन जहाँ करथले सेगुडा से माने निज लाभ पई करथले ओके सो दैट लॉजिस्टिकली दे आर वेल कनेक्टेड विथ डिफरेंट पार्ट्स युद्ध बेले कि जेते बेले रिवोल्ट करिका होची से माने ट्रूप्स मूवमेंट करि परिबे अलगा जिंस करपे से माने इंडियंस को जंत हेल्प करिया पे तांकर इंटेंशन नथिला आमे सेटा गोटे कहि परिबे आपण ओके एंसिलियरी लाभटा आमे पाइलु राइट सो सोशल रिलीजियस कॉजेस भितर तापर से माने बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप्स भी नेले फॉर एग्जांपल किछिटा कस्टम्स थिला ट्रेडिशंस थिला ओके जोटा कि बंद करा हला जोटा कि खराब ट्रेडिशंस थिला ताकू से माने बंद कले ठीक अछि तो ऑर्थोडॉक्स इंडियंस भाबिले कि माने मे बी एमाने हमो कन्वर्ट कर देबे कि माने हमो रिलीजन रे इंटरफेयर करूछन ओके गुडा रिलीजियस कॉजेस रे गला बिकॉज़ इट वाज अ वेरी व्हाट यू कैन से ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी इवन जेतो आगु हमें मिलिटरी कॉजेस भी देखिबा सेतरे जनरल कॉन्सेप्ट कौन थिला एबे भी अछि अपन देखिबे ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज रे एबे भी जेबे बाहागर होउची कोनते एत्तिक दिन पर्यंत हस्बैंड वाइफ बाहरिबेन
ओके कहना सेते बळे कांसेप्ट थिला कि आपण जदी नई पारी होउचंदी कि समुद्र पारी होउचंदी ओके एंड यू स्टे देयर फॉर सम पीरियड यू लूज योर कास्ट ठीक अछि तो एमाने जो मिलिटरी रीजंस रे हमें देखिबा एमाने जो जाई कि बाहर देश रे फाइट करूथिले ओके तापर एतले फेरुथिले तो तांको गां रे तो तांको एक्सेप्ट करू ही नथिले प्लस इवन तांको निज रेजिमेंट रे भी जो सोल्जर्स माने जाई नथिले बाहर को से माने भी तांको संगे डिस्क्रिमिनेट करथिले ओके कि तुमे भाई कोन सेठी खाई के आछो कोन करि के आछो यू हैव इन अ सेंस यू हैव लॉस्ट योर कास्ट एंड कास्ट वाज अ वेरी इंपोर्टेंट थिंग दोस डेज कुछ पहले तो ये गोटे रीजन भी हे पर सो ओके सोशियो रिलीजियस कॉजेस एंड रिलीजियस कॉजेस सो प्लीज टेल मी कोन एथरे ऐड होबो So we can Sir, also add abolition of sati, child marriage, and also widow yes remarriage. yes correct जेते सब प्रोग्रेसिव स्टेप्स से माने नेले हमर ऑर्थोडॉक्स पॉपुलेशन भाबिला ये हम धर्म रे इंटरफेयर करछन ओके इंटरफेरेंस इन रिलीजन एंड प्रिपरेशन ऑफ ग्राउंड फॉर कन्वर्शन ठीक अछि करेक्ट एनीथिंग एल्स एनीवन एल्स ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରଫ जो मुस्लिम्स मानकर हाईएस्ट रैंकिंग तला ताको भी से हटे दीतले तो से ताको भी से मुस्लिम माने भाबिले जे आगुरु मुस्लिम भाबुतले जे एमाने हमकु हमें माइनॉरिटी हमकु बचेबे हेले सेते बेले ताको लागिला जे ना ये टोटल हम अगेंस्ट अछंती आ पुनी कन्वर्जन ऑफ क्रिश्चियनिटी भी ऐड ही पारिबो ओके फाइन एनीवन एल्स ठीक है जोड़ा ऐड करी हबो एटी पर्टिकुलर केटा जिंस होची केना एग्जाम रे हमकु के पर्टिकुलर जिंस को लिखियर अछि द डिसीजन टू टैक्स mosques and temple lands okay so एटा गोटे थिला आउ भी गोटे थिला कोन रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट 1856 so एगुडा रिलीजियस रीजंस में तकर रिजनमेंट थिला आउ जोडा कहले कि रिफॉर्म सोशल रिफॉर्म से मन जोडा आउतिले okay like what we discussed now the orthodox population or the general population took it as an interference with their religion and preparation of ground for their mass conversion ठीक अछि केना से माने ऑलरेडी हिस्ट्री से देखि सारतिले जेतले पोर्टुगीज माने आसिले सो वी हैड दिस यू नो दिस इन गोवा ओके तो सेठी तांकर मास कन्वर्शन बहुत वर्ष पर्यंत चलला खाली सेटा गोवा रे नै नटला पोर्टुगीज आउ स्पेनिश माने जोठी भी सब रूल करचंती से माने सेटा करतिले ताकू टेक्निकली इनक्विजिशन को जाउतला ओके हमरो 1857 परटू पढुछु सेतपई सेपटू को मु जाइनी बट यू राइट इट डाउन केतेटा जिंस अछि सेगडा आपण टिके निजे ताकू एक्सप्लोर कले आपण आउरी बेटर जानि परिबे इनक्विजिशन ऑफ गोवा ओके sir even the Portuguese tried to encourage the Portuguese natives to marry the Indian natives so that the culture will remain for a long time yes that is correct and they are quite successful in it तारो किछि भलो भी आपणकर रिजल्ट हमें पाइलु फॉर एग्जांपल एबे जदि देखिबा गोवा रे यूनिफॉर्म सिविल कोड अछि से गोटे राज्य जोदरे यूनिफॉर्म सिविल कोड अछि दैट इज मेनली थैंक्स टू द यू नो पोर्टुगीज लॉज इफ यू गो टू गोवा आपण प्राय हमें कोन गोवा बीच बुलिया पे जाउछु सेही मेंटालिटी रे जाउछु आपण एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री yes sir uniform civil code सेठी अछि ओके एबे उत्तराखंड भी स्टार्ट कलानी तार से तार कोन व्यवस्था करिवो बट एनीवे गोवा रे ऑलरेडी अछि सेठी आपण जदि जिबे सो एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री देखिबे तांकर जो सब फोर्ट्स करिका अछि फोर्ट पाखा पाखे जेते सब टूरिस्ट लोकेशंस अछि स्पेशली जो शैक्स करिका ओके खाइया पे जो स्मॉल रेस्टोरेंट्स करिका आपण देखिबे मोस्टली सेडा सबु वुमेन मानको नारे थिबो फ्रॉम पोर्टुगीज डिसेंट ओके आउ पोर्टुगल रे भी इफ यू आर फ्रॉम गोवा एंड बिफोर गोवा बिकेम ए पार्ट ऑफ इंडिया जदि आपण सेते बेले पोर्टुगीज सिटीजन थिले आपण को इजीली सिटीजनशिप मिलि जिवो ओके सेठी डुअल सिटीजनशिप रो कांसेप्ट अछि किंतु सेटा कार्यकारी हुएनी काहे कि ना आम देश रे डुअल सिटीजनशिप रो कांसेप्ट नाही ठीक अछि सो दैट इज इवन इफ यू गो टू गोवा नाउ आपण देखिबे देयर इज ए you know a substantial part of the population jar feelings ta टिके अछि पोर्टुगल संगे एमे सेमति कहि पारि ओके एनीवे तो नेक्स्ट आउ कोन लिखि पारिया एथि ऐड हबो एथि से लेखिनी कोटा हमरो सोशल रिफॉर्म्स ठीक अछि एटा गोटे ऐड करे सोशल रिफॉर्म्स से भलो पई गले बट एटा को हमें भाबिलु कि से माने हमर रिलीजन रे इंटरफेयर करछन राइट तापरे आउ गोटे हला influence of outside events external events okay there was the concept of the superiority of the white race ठीक अछि ताको white man's burden को जाय कि ये माने जो माने सब कलर्ड रेस माने खाली इंडिया को कोन होतले जते जते कलर्ड नॉन व्हाइट लोक अछंती से माने बेसी किछि जानि नाहंती सिविलाइजेशन ऊपर
तेणु तांकु सिविलाइजेशन विषय जनइबा एटा गोरा लोकों को काम आम संगे या कले सेपटे ऑस्ट्रेलिया रे एबोर्जिन्स को संगे से कले तांकर एंटायर जनरेशन ता तो सफा कर देले सेठी ओके फोर्सफुली एबोर्जिन्स को ओके जो माने आमे जिंति हमर में ट्राइबल्स अछन सिंपली से तांकर पीपल ऑफ द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स तांकर पिलां को नै कि तांको चर्च रे रखि कि तांको गोटे अलगा टाइप रो एजुकेशन देले जेंति कि से माने जेतले बड़ हेले से माने ना निजो कल्चर विषय किछि जानले ना निजो बापा मां को चिनि पारले ओके आउ किछि वर्ष आगुरु तांकर प्राइम मिनिस्टर सेत पई ही अपोलोजाइज ओके कि आमे एटा भूल करिछु ताको लास्ट जनरेशन बोली कोंती ओके सो एनीवे सेटा आपण देखि पारे कि आउटसाइड इवेंट्स जो हैला ए जो कांसेप्ट थिला व्हाइट मैन्स बर्डन और रेशियल सुपीरियरिटी एटा भांगिला काहे कि ना ब्रिटिश वर डिफीटेड okay by the Afghans in the first Afghan war in the Punjab wars and the Crimean wars okay तो सेटू इंडियंस माने कोन जानले कि आंकर ये जो कहउचंती ओके हमरो रेशियल सुपीरियरिटी व्हाइट मैन्स बर्डन एक्सेट्रा एगुडा किछि नुह आमे आंको हरे परिबा ठीक अछि तो सेटा गोटे रहला देन मिलिटरी कॉजेस आसिला जोटा कहउतिले देयर आर लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द व्हाइट्स माने यूरोपियन सोल्जर्स एंड द इंडियन soldiers okay so सेटा गोटे रीजन थिला भत्ता कथा जो कहले दैट वाज अनदर रीजन भत्ताटा काई मिलतुला ना से जो बाहर को जाइंकी अक्रॉस द सीज जाइंकी से माने फाइट करतले तो तांको सोशल स्टिग्मा ओके जेतो इंडिया को फेरुतिले सोशल स्टिग्मा फेस करिया पड़तला तो सेटा भी बंद कर देले ठीक अछि तापरे लॉट ऑफ अदर इश्यूज वर देयर ता भीतर जोडा कि इमीडिएट कॉज सर जो कार्टिज जो एनफील्ड राइफल सेटा सर हमें मिलिटरी ऐड करबा ना रिलीजियस रे ऐड करिया ना बोथ रे लिंक करिया सेटा इमीडिएट कॉज हे परिबो okay and it can be added in both seta religious it was a kind of blasphemy okay it was kind of rumors blasphemous for eta basically rumors okay for both of them for the Muslims as well as for the Hindus he got a mix of fat of pig and cow okay सेथरु बना हिची सेटा राइट सो आ तारो सिस्टम कोन थिला कि आपण गोटे हाथ रे तो बंदूक धरिबे आउ गोटे हाथ रे एतले गुड़ी पसेबे तो आपण को से जो फिल्म ता अछि पतला फिल्म ता सेटा दांतरु छिडिया पड़िबो दैट वाज द प्रॉब्लम तो से कोइ गला कि सेतरे ग्रीस्ड लागि छी ओके जो थिन फिल्म ता लागि छी जोडा छड़िया पे पड़िबो दांतरु सेथरे आपनकर पिग मीट भी अछि आ काउ मीट भी अछि सो इट बिकेम सैक्रिलेजियस फॉर बोथ द हिंदूज एंड मुस्लिम्स ओके तो एटा इमीडिएट कॉज रे दे परिबे ओके इट आउ रिलीजियस कॉजेस रे भी दे परिबे ठीक अछि आउ गोटे लास्ट पॉइंट देछि मिलिटरी रीजन भीतर मिलिटरी हिस्ट्री भी ताको देखिया पड़िबो दिस वाज नॉट द फर्स्ट रिवोल्ट ओके बाय द ब्रिटिश इंडियन आर्मी तो ताकर हिस्ट्री थिला बेंगल रे 1764 वेलोर म्यूटिनी ओके वेलोर म्यूटिनी बहुत जण कोंती सेटा ए बिग प्रिल्यूड जेंति आमे कहउछु हमर एठी फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हमर पाइको रेबेलियन बा वेलोर म्यूटिनी टा भी यू नो गोटे सेठी सेटा सेही हिसाब रे भी सने भाबंती ओके देन अगेन इन बरकपुर एंड द अफगान वॉर्स तो सेठी भी गोटे टाइप रो म्यूटिनी हेतिला ब्रिटिश इंडियन आर्मी द्वारा सेटा प्रथम थर पे नुह ओके बुझि पाले एनी अदर पॉइंट्स व्हिच वी कैन ऐड हियर एनीवन हु वांट्स टू ऐड समथिंग ओके 12 मिनिट्स मिलिबो आपन को सो इन 12 में 2 पेजेस अपन लिखि बेले डिपेंडिंग ऑन योर हैंडराइटिंग आल्सो जो हैंडराइटिंग छोटो अछि तो आपनकर ऑब्वियसली ठीक है कम रहबो सेटा नेक्स्ट स्प्रेड ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 तो एठी आपनकर फिगर्स देनी सबु क्वेश्चन रे फिगर करिया दरकार नै किंतु जो जो क्वेश्चन रे फिगर रो सुटेबिलिटी अछि जेंति कि एठी अछि एठी हमें कोन कर परिबा कि जोडा मेन सेंटर्स थिला आउ जो स्प्रेड होतिला तो तारो गोटे इंडिया रो फ्री हैंड स्केच आपन को बनेबार अछि आउ सेथरे पॉइंट्स रो मार्क करिवार अछि हमरो तीनटा फ्री हैंड स्केच आपन को प्रैक्टिस करिया पड़िबो इंडिया भलरे ओडिसा आउ वर्ल्ड टा अने तो एग्जैक्ट तो करके बेहबनी किंतु देखा जीवा कथा वर्ल्ड भलिया ओके तो एटा ऑस्ट्रेलिया बोली जणा पड़िया कथा ओके आउ सेटा अफ्रीका बोली जणा पड़िया कथा सेति के गले ठीक अछि ओके बट एई दीटा भलरे आपन प्रैक्टिस करिया पड़ियो तो एई केस रे हमरो फिगर रहिबो इंडिया मैप टा सब क्वेश्चन रे फिगर दरकार नै जो क्वेश्चन रे रिक्वायरमेंट अछि किछि आपन इलस्ट्रेटिव वे रे ताको रिप्रेजेंट करबे जाउछन सेठी दरकार सब क्वेश्चन रे गोटे फिगर करिवे बोल दरकार नै ऑप्शनल रे दरकार परे जीएस से दरकार हबन ओके सो स्प्रेड ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857
ठीक अछि सो एटा दिस इज लाइक 250 वर्ड्स ऑफ क्वेश्चन आउ आपन 20 मार्क्स क्वेश्चन 12 मिनिट आपन को मिलबो सो लेट अस स्टार्ट देन जोटा इमीडिएट ओके कॉज सेटा से कहला द स्पार्क जोटा जस्ट हमें डिस्कस कलु ओके सो there were some reports rumors that the the fats of cows and pigs are involved in this okay so seta first reason hela right tapare it started from meerut ठीक है starting सर from कौन मिक्सिंग ऑफ बोन डस्ट इन आटा सर सेटा भी हाँ रूमर हाँ that the report said that ठीक है and the introduction of the Enfield rifles okay एगुड़ा सब rumors थिला actually से माने करू नथिले से पे से reports कहला okay कुछ पहले reportedly made of beef and pig fat आरो बहुत गुडे परे सब कमिटीज अछि if you go to the आमे तो हमर एग्जाम पे जति के दरकार सेति की पढिबा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया जने लिखि चंती एस.सी. राय चौधरी एटा ऑनर्स रे पढा हुए से एस.सी. राय चौधरी तांकर बोधे 6टा कि 7टा वॉल्यूम अछि जोतरे कि से पूरा इन डेप्थ से रिपोर्ट्स करिका सब सो मेनी ब्रिटिश रिपोर्ट्स ही हैज कोटेड जोटी कि से कहि जंती कि एक्चुअली आरो किछि गोटे साइंटिफिक बेसिस नाही कि एक्चुअली सतरे से माने करथिले एगुडा सब र्यूमर्स ही थिला बुझि परले तो सो बट सम इंडिक हिस्टोरियंस अछंती जो माने लाइक इंडियन हिस्टोरियन से माने कोनती ना एटा सत बट आमे जदी ऑब्जेक्टिवली देखिबा हमको आज पर्यंत सेमती किछि प्रूफ मिलती कि ब्रिटिश माने एटा जानि कि करछन ओके सो एनीवे स्टार्टिंग फ्रॉम मीरट एटी बहुत भी तार डिटेल्स देखि मे बी आपन मने रख परले भलो नले ओवरऑल आपन को लिखिया पे पड़िबो ओके सो मीरट रु स्टार्ट हैला यस इफ यू कैन एड सम पॉइंट्स हियर तो हम कोन लिखियो रथि कोठी स्टार्ट हैला और तार लीडर किए थिले ठीक अछि लीडर किए थिले सेही जगहटा सेति कि आपन को लिखिबार अछि सो स्टार्ट्स फ्रॉम मीरट सर लीडर ऑफिशियली बनाइतला बहादुर सर जफर मुगल एम्पायर को तापर सर नाना साहेब थिले तांत्या टोपे थिले हाँ तापरे झांसी र रानी लक्ष्मीबाई लखनऊ र बेगम हजरत महल यस एई भलिया ओके सब एंगल रो देखिबार अछि और सेतरे बहुत जण अलगा भी थिले फॉर एग्जांपल देयर वर लॉट ऑफ मुस्लिम सर क्लेरिक्स बिहार रो कुंवर सिंह थिले अमर सिंह थिले यस आउ तापरे सर हमर संबलपुर रो वीर सुरेंद्र साहे यस सर आउ एनी मुस्लिम लियाकत खान थिले लियाकत अली थिले इलाहाबाद रो यस सो देयर वर सब बेगम हजरत महल एंड देयर वर मुस्लिम क्लेरिक्स आल्सो जेंति कहले माने जो माने मौलाना मौलवीज माने थिले से माने भी सपोर्ट कले ठीक अछि तो दे आल्सो केम इन सपोर्ट ऑफ द म्यूटिनी ओके इन डिफरेंट प्लेसेस जो बहादुर शाह जफर को कराला कोन पई कराला एटा दी तीनटा पॉइंट अपन यू कैन गो थ्रू देयर ओके व्हाट आर द रीजंस फॉर द चॉइस ऑफ बहादुर शाह एज सिंबॉलिक हेड से तो बुढ़ा जे थिले आ सीए भी निजे इंटरेस्टेड न थिले ओके काइना ही वाज गेटिंग ए डिसेंट पेंशन फ्रॉम द ब्रिटिश सी चाहू नथिले ब्रिटिश अगेंस्ट जाई कि किछ गोटे प्रॉब्लम करिया पई तांको सर 80 प्लस एज ही तला आउ ता परे तांको फैमिली संगे जा हला से भी जानी थिले कि मु जदी जॉइन करबी सेमती हबो तो तांकू पुश करिया पई हु वाज द मेन पर्सन रिस्पांसिबल तांकर जे जनरल थिले बख्त खान ओके सो ही वाज द मेन पर्सन से जहा को बुझे कि नहीं आपण यू विल बी द हेड ओके तो सी गोटे सिंबॉलिक हेड हेले एंड दैट सिंबोलिज्म इज रिप्रेजेंटेड हियर व्हाई इट इज इंपोर्टेंट ठीक है तो आ ऊपर भी गोटे 10 मार्कर आसी जाय पारे कि सिंबॉलिक इंपोर्टेंस कोन बहादुर शाह को मानिया पे दैट मींस दैट पीपल वेर स्टिल से माने ब्रिटिश गोटे फॉरेन रूलर टू बेटर जो माने एस्टैब्लिश रूलर थिले एटी मुगल्स माने तांको प्रिफर करूथिले ओके सो दैट इज द थिंग नेक्स्ट द सिविलियंस जॉइन तो एज वी सी सर हमें एटा भी ऐड कर परिबा जेटी लोटस आउ चपाटी सिंबल तला मेसेज रिले करिया पे एग्जैक्टली सेटा बेसिक स्पेसिफिक पॉइंट्स यू कैन ऐड दैट तो आउरी आपन को वैल्यू एडिशन हबो ओके सो सिविलियंस जॉइन सिविलियंस सब जगह जॉइन करलेनी मेनली अवध वाज वन ऑफ द एक्सेप्शंस ओके आउ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस रे माने जॉइन करले ठीक अछि जो जो जगह रे तांकर राजा माने किंबा जमींदार माने बहुत हैरान हेतिले
से माने कहले ताको लोकन को यू कम एंड जॉइन बट जो जगह रे तांकर किंग्स माने तांकर ये माने से माने लॉयल रहिले ब्रिटिश पाई ओके द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इज ऑफ द सिंधियाज ऑफ ग्वालियर ओके तो ब्रिटिश वर ऑलरेडी जेतेबेले दिल्ली वाज टेकन ओवर तो तांकर sir also Nizam of Hyderabad. यस जो माने रहिले ना से माने ब्रिटिश अगेंस्ट गलेनी दे वर लॉयल टू द ब्रिटिश सो ब्रिटिश मानकर ए कहबार थिला आफ्टर दिल्ली फेल कि जदी ग्वालियर रे जदी ग्वालियर यू नो रॉयल्टी जॉइन्स द रिवोल्ट ताले वी शुड पैक आवर बैग्स ओके ताले आउ हमको संभाली होबनी बट ग्वालियर सिंधियास माने से माने जॉइन कलेनी ओके सो सिविलियंस जॉइन नेक्स्ट हला sir ei kotha bote Canning Lord Canning कहथिले मोर एग्जैक्टली मने पड़नी कि सेटा कहिथिले बट यस दैट वाज द कांसेप्ट ऑफ द ब्रिटिश कि से माने जानिथिले कि सिंधियास वर वेरी पावरफुल जदी से जॉइन करूचंती ताले हमको प्रॉब्लम हबो बट दे डिड नॉट जॉइन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर ओके तापरे एई जो पॉइंट्स उडा ओके को जगह आउ तार हेड किए थिले ठीक अछि सो यू कैन गो थ्रू दैट sir ei leaders मानो को सप्रेस के करथिले जेंति कि हजरत बेगम मेल को कैम्बेल रानी लक्ष्मी को ह्यूग्रो एटा भी लिखले सेटा हमें जदी 20 मार्कर अछि 12 मिनिट रे केना क्वेश्चन कोन पचाछि ता ऊपर डिपेंड से कहूची सेंटर कोन थिला ठीक अछि त सो वी वुड हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट द थिंग इज दैट हमें सब जगह सब जिंस लिखि परिबा ठीक अछि एति कि लेखु लेखु हमरो 12 मिनिट ऊपर पड़े काने से कहि कि सेंटर कोडा तार स्प्रेड कोठी हेतिला दैट वाज द क्वेश्चन ना तेनु जेतले क्वेश्चन पेपर मते मिलिबो मु कोन करबी मु ताको अंडरलाइन कर देली से कोनटा चाहूची मोटू स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट से कहूची ठीक अछि तो सीए हाउ द रिवोल्ट वाज कंटेंट सेटा कहूनी जदि कहतांता तापरे आमे ताको लिखि परतंते केना से गोटे गोटे सेंटेंस लिखिया पे भी मोरो टाइम पड़ेगो ओके सो दीज आर yes द sir थिंग्स यू हैव टू मेंशन ओडिसा रो भी मेंशन करि परिबे से ओके सो दिस इज अबाउट योर स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट एतरे ऐड कोन हबो फिगर टा ऐड हबो जोटा सेंटर ऑफ रिवोल्ट सेगुडा सब आपण ऐड करिवे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 5 रीजंस फॉर फेलियर ऑफ रिवोल्ट तो एटा हमरो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस माने सावरकर हेले कि एमाने मानंती नि कि एटा गोटे फेलियर बट गोटे ऑब्जेक्टिव व्यू रु देखिले ताको हमें फेलियर एथि पई कहि परिबा काहेकि ना एमानकर किछि गोटे कोऑर्डिनेशन नथिला ओके आउ सेतो बळे कांसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म वाज नॉट देयर जोडा कि परे आपडकर आसिला ओके कोन ना हमें देश पई करूछु जिंसडा सेही कांसेप्टटा नथिला समस्तंगर पर्सनल प्रॉब्लम्स थिला से रागटा मिसी गला दे हैड अ कॉमन एनिमी बट दे डिड नॉट हैव एनी कॉमन प्लान दे डिड नॉट हैव एनी कॉमन गोल ताकर एम ए नथिला कि हमें ब्रिटिश को थ्रो देम आउट ऑफ इंडिया सेटा ए पर्यंत आसी नथिला ओके सो फेलियर रो रीजंस का हमें देखिबा ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन वाज एब्सेंट एटा तो ऑब्वियस थिंग द territorial spread limited territorial spread was another factor okay so pura india to tere for example extreme north okay extreme south east west sabu jagare spread in notla बहुत limited area रे एटा थिला तापरे it was not a struggle of the masses except a few places common लोक sabu jagare join कले okay so all classes did not join तो ता भीतर से तार पॉइंट्स उडा देछि आपण सब हेडिंग्स उडा देबे तापरे गोटे सब तो एमती लिखि परिबेनी जा लेखाइ छै बट ताकू पढी देले एटलीस्ट मु तार 50-60% लिखि परिबे ओके आ गोटे कोन थिला कि पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट ब्रिटिश पाखरे लेटेस्ट आर्म्स इक्विपमेंट थिला एमाने रादर तांगर कोर्ट रु ओके कोर्ट कोन कोर्ट इज अ प्लेस वेयर दिस आर्मरी जोटा आर्म्स रखा हुए तो से आर्मरी रु चोरी करी कि नै कि यूज कले ओके द म्यूटिनियर्स माने सो पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट प्रोविजनिंग भी नथिला खाइबा पीबा एडा सब दैट इज वन ऑफ द रीजंस ओके कि से माने फाइनली दिल्ली यू नो दे हैड टू सरेंडर ओके इट वाज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश काहे ना अंकु लॉजिस्टिक्स किछि पहुंचलानी खाइबा पीबा मोर एम्युनिशंस ओके सोडा मिल पलानी अनकोऑर्डिनेटेड एंड पुअरली ऑर्गेनाइज्ड सो एज आई टोल्ड यू ताकर प्लानिंग सेमती किछि आगुर नथिला इट वाज नॉट अ प्लान्ड ओके revolt or movement whatever they did not have common goals they did not have common leadership okay so गोटे चांस मिल गला समस्त को से भी कले ताको मु सपोर्ट करूची मु काई ताको सपोर्ट करूची कारण मु भी हैरान छि वी हैड अ कॉमन एनिमी ओके दैट इज द ब्रिटिश तो ब्रिटिश को किंतु हैरान करबी सेटा ताको एम थिला बुझि पाले सो these were the
reasons आउ कोन reason एथरे ऐड करि परिबा एतिकी तो से लिखिला तापरे anyone else who can add these are 5-6 reasons we Sir, have seen. the educated and the semi masses, they were refrained from the revolt Yes, because they thought that it is only a regional rebel, not a overall nationalist. और आपण जोटा कहले के nationalism concept missing कला ଆଉ ସେମାନେ ବି Exactly. ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ହିଁ ଦେଶକୁ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ନେବେ ନା କି ରାଜା ମାନେ So the British, okay, the educated Indians, that's correct. Say point ta educated Indians mane, okay, they did not support. Okay, ଆଉ masses भी बहुत कम जगह रे ही support करते थे. Okay, एमती नहीं कि समस्त support कले, right? So it was तांको माइंड रे थिला एटा सिपाही माने करचंदी तांकर एमती भत्ता मिललानी आलानी से आलानी से पई they are तांको cause पई से माने लडुचन. ठीक আছে हमरो एथरे डायरेक्टली किछि नबा दबार नहीं. Okay, yes. Any other point that you can add? So next, write a short note on the nature of revolt of 1857. Eta ketra padi heichi. Nature of revolt mane was it a Sepoy mutiny? Was it a first war of independence? Ei dita bhitare amara conflict achi. Was it only a Sepoy mutiny or was it on the other hand jo mana Indian historians mane कहउचंदी कि war of independence? ठीक अछि ए dita bhitare हमको देखियार अछि. So what different people have said सेटा एठी देछि. Okay, so आपन को बैलेंस करे पड़े. You have to write on both the sides and then you have to give a कि war of independence हमें ताको एथि पई कहि परिबानी कि planned नथिला. ठीक अछि, common leadership नथिला, common goals नथिला. Okay, the concept of throwing away the yoke of British imperialism, that was not there. समस्त काई पसिला भितरे काई ना ताको पर्सनल एजेंडा किछि थिला. काहारो जमी पळैछि, काहारो राजत्व पळैछि, काहारो आउ कोसी कोन पय रागी कि अछि सेही रागटा मिसी गला. ठीक अछि, they had a common enemy बस आउ किछि common नथिला. Right, apart from the common enemy nothing was common. बुझि पाले. So that is the thing you have to write. So गोटे war of independence सेटा सेमति ताकू गोटे unbiased way रे कहि होबनी. But at the same time was it a failure? हमें reasons of failure previous question रे देखिलो. तारो next question रे अछि आगो question रे अछि तारो कोन significance ता. तो significance ता बहुत important. Okay, significance कोन कि ठीक अछि जदि आपण एंती कहि परिबेनी कि से तारो aim सुडा पाई गला but it kindled the fire, okay, of nationalism, of throwing the British away. The Indians now believe that they can throw the British. जदि एतिकी कम लोक एतिकी limited ammunition रे दिल्ली को जाई कि okay for such a long period of time they could occupy Delhi. तो जदि गोटे अधिका सपोर्ट हबो लोक चाहिबे से आराम रे ब्रिटिशर्स मानको बाहर कर दे परिबे. एई कॉन्फिडेंस तो ताकर आसी गला सेटा हला सबुटु बड़ अचीवमेंट जोटा आमे पर देखिबा. सो एई एक्चुअली एटा तो सक्सेसफुल गोटे सेंस रे कोइ परबो काहे कि ना ईस्ट इंडिया कंपनी ओवरथ्रो हेगला टी माने क्वीन राज चला ता परटू ईस्ट इंडिया कंपनी रूल ही बंद हेगला. consequence रे नेक्स्ट क्वेश्चन अछि एटा consequence कोन तार थिला से हिसाब रे आपण कहि परिबे. ओके, बट से तांकर एम जोटा थिला दैट इज द थ्रो अवे द ब्रिटिश. ओके, कि तांको किछि असुविधा करिबा तो सेटा मोर और लेस से माने कर परले. इट वाज क्रश्ड, द रिवोल्ट वाज क्रश्ड अल्टीमेटली. ओके, तो एठी जस्ट खाली हिस्टोरियन को ना लिखिबे. दीटा कैटेगरी रे हिस्टोरियन जाउचंदी. इंडिक हिस्टोरियंस जो माने आउ सबु इंडिक हिस्टोरियन सबु इंडियंस माने ए कोनांदी कि इट वाज वार ऑफ इंडिपेंडेंस. द मेनी especially the left leaning जो माने leftist historians अछंदी से माने कहया कथा एटा हला गोटे सिपाही म्यूटिनी restricted to the sepoys for their own selfish goals. Okay, आउ किछिटा इंडियन historians like Savarkar and all से माने कहउछनी कि ना एटा first war of independence. Okay, so objectively हमें analyze कले it is we do not see the characteristics of a war of independence. Okay, it was more localized, okay, and more personal reasons were involved in it. ठीक अछि. So समस्त को ना लिखिबे और से कोनटा तांकर कोन से इन फेवर ऑफ दैट कि इट इज ए वार ऑफ इंडिपेंडेंस और इट इज ए सिपाही म्यूटिनी एतिकी लिखिबार अछि. ओके, सो 8-9 जन कर देछि समस्तंकर जते मैक्स अपन लिखि परिबे सेते भलो. बोथ इंडियन हिस्टोरियंस एंड फॉरेन हिस्टोरियंस. ओके, तापर जोटा कहउतिले
रिजल्ट टा कौन है डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 ठीक है सो इट मार्क्स अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इट लेड टू फार रीचिंग चेंजेस इन द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन थिला तो एटा फर्स्ट तो हैला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ओके 1858 ताको द एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी कहला सेतरे बहुत गुडे चेंजेस हला जेंति की आपनकर कंपनी टू क्राउन रूल शिफ्ट हला ओके तापरे से जेते सबु मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल कॉजेस उडा थिला सब्सिडियरी अलायंस थिला ओके एंड योर लैप्स डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थिला अदर सच पॉलिसीज जोटा की नेटिव रूलर्स मानन को रगे देथिला सेगुडा सबु बाहर करला ओके तापरे गोटे जोटा की कुआ गला मैग्ना कार्टा ओके से टाइम रे बाय द क्वीन टू हर इंडियन सब्जेक्ट्स तो सेतरे कोन राइट्स रहिबो इंडियंस मानकर सेटा भी टू सम एक्सटेंट कुआ गला ठीक है सो तार पॉइंट्स जो देछि कोन कॉन्सिक्वेंसेस थिला दोस पॉइंट्स यू हैव टू राइट सो दिस इज अगेन ए 20 मार्कर 12 मिनिट आपन को मिलिबो यू हैव टू राइट दैट ओके any other points that you could add एथर ऑलरेडी ऑलमोस्ट 10 टा खंडे पॉइंट अछि ओके सो हमें जदि कहबा हमर अराउंड 5 to 6 points for 10 marker and 10-12 points for 20 marker ओके आ जो पॉइंट एक्सप्लेन करिवार थिबो ताको सब हेडिंग देकी तळे एक्सप्लेन कर दे परबे any other points that you want to add Sir, freedom of religion was ensured, sir, along with gradual participation in the administration. okay add kari paribe seta fine now come to question 8 significance or importance of revolt of 1857 so जोटा हमें देखिलु कि हां सेटा तो ओवरऑल हमें जदि ताको देखिबा सेटा हमें कहउछु कि ऑब्जेक्टिव रे फेल हैला बट मेन जिंस हैला इट किंडल्ड द फायर ऑफ नेशनलिज्म जोटा कि गोटे इंस्टीट्यूशनल वे रे इंडियन नेशनल कांग्रेस हैला पर सेटा आउरी इंस्टीट्यूशनलाइज हे गला बट द फायर वाज किंडल्ड ओके यूटू सेटा स्टार्ट हैला बोली आपण कहि परिबे ठीक अछि सो what were the consequences so consequences both positive and negative that we have significance consequences the color significance रे एटा हैला गोटे नंबर 1 कॉन्फिडेंस आसिला इंडियंस को भितरे कि आमे ब्रिटिश मानु को ओवरथ्रो करि परिबो ओके देन आउ कोन एक्सटर्नल सोर्सेस रु भी आमे देखिलु कि अलगा लोक माने भी अफगान्स माने हरेले क्रिमियन वॉर ले से माने हरले तो से माने किछि इनविंसिबल नो से जो ऑरा ऑफ इनविंसिबिलिटी से माने निजो रखि देले चारि पटे जो लास्ट जोडा लिखि छि एक्सक्यूज मी द व्हाइट मैन्स बर्डन सेमती एक्चुअली किछि नाही ओके सो दैट दे केम टू अंडरस्टैंड राइट देन आउ कोन हमर डिफेक्ट्स कोन राइट हमर बेटर इक्विपमेंट दरकार बेटर आर्म्स दरकार ठीक अछि सो दैट वाज अनदर थिंग the revolt of last but one pointer dekhontu revolt of 1857 did establish a local tradition of resistance to British rule which were to be of help in the course of national struggle for freedom okay so it showed the path okay first step towards the independence of country au gote bolo jinso kon thila Hindu Muslim unity okay Hindu Muslim unity that was also seen here so it be significance gote बहुत important factor se pe seta bold re heading tar ach okay anything else you would like to add significance kono revolt of 1857 why it is important in the history in the annals of modern Indian history anything else apart from these significance रे सर ऐड कर परियो जे एटा वन ऑफ द massive violent struggle rebellion against the colonial power एटा ही सिग्निफिकेंस लागु छ हां एटा गोटे rebellion against the British okay massive आउ violent से दीटा जिंस तांकर एई स्केल रे ही नथिला गुरु बट अलगा लेवल रे जेंते हम देखलु वेलोर रे सेठी हेतिला आगुरु हेतिला सेटा okay but scale was more as compared to that although it was not pan India
पूरा देश रे स्प्रेड इन नथला ठीक अछि आर आउ गोटे क्वेश्चन हला डिफरेंस बिटवीन इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड 1857 तो इंडियन नेशनल मूवमेंट ता मास बेस थिला कॉमन पीपल सर आउ गोटे होची सर एठी वुमेन लीडर करो भी जेमति कि रानी हजरत महल हो कि झांसी रानी लक्ष्मीबाई वुमेन मानकर भी माने बहुत हाथ रहिला ए रिवोल्ट रे वेरी गुड पॉइंट सेटा आपण ऐड करि परिबे सिग्निफिकेंस रे ओके नॉट ओनली दैट आपण को डिफरेंट डायमेंशंस देखियो अछि सेटा रहला इट वाज यू नो रिलीजियस हार्मनी रो गोटे एग्जांपल दे परिबे कि मुस्लिम लीडर्स वर आल्सो देयर ओके जोटा में लीडर्स करो देखिलु कॉमन पीपल वर देयर जेमति हम देखिलु गोटे विलेजर ओके लास्ट पॉइंट जोटा देतला लास्ट लोक जोटा देतला गोटे विलेजर ही आल्सो प्लेड द रोल एंड ही यू नो सपोर्टेड द ट्रूप्स फॉर व्हिच ही वाज किल्ड okay executed by the British एटा गोटे क्वेश्चन अछि रोल ऑफ वुमेन इन 1857 सेटा असाइनमेंट रे अछि बोथ ओडिसा रु भी अपन लिखिबे आउ नेशनली भी लिखिबे नेशनली तो ए दिटा अपन लिखिले हजरत महल आउ लाली लक्ष्मीबाई एटा समस्त लिखिबे बाकी और भी अछंती ओके और भी अछन सेटा हला अपन आज रिसर्च करिवे इंक्लूडिंग फ्रॉम ओडिसा ठीक अछि इंक्लूडिंग फ्रॉम ओडिसा आउ काली स्टार्ट हबा आगरु सेटा मु डिस्कस करिवे सो एवरी क्लास आई विल गिव यू टू क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू फाइंड आउट एंड बिफोर द at the starting of the next class seta ame discuss kariba okay so next question number 9 explain how uprising of 1857 constitutes an important watershed in the evolution of British policies towards colonial India eta x mane previous year question UPSC ro ठीक अछि तो ame UPSC रो भी जो क्वेश्चंस अछि ए चैप्टर को रिलेटेड that also we can discuss सेतरे देखंदु क्वेश्चन बुझंदु आगे uprising of 1857 constitutes an important watershed in the evolution of British policies towards colonial India तो हमरो फोकस कोन रहइबो आंसर रे आरो consequence जोगु ब्रिटिश माने आस्ते आस्ते कोन नुवा पॉलिसीज आनिले इंडिया इंडियंस मान को पई ता ऊपर आंसर ता फोकस करिवो नॉट कोन हेला सेट ओके सो फर्स्ट व्हाट दे डिड you can see efforts to westernize Indian society okay was one of the main reasons of the mutiny so they tried to integrate Indian higher caste and rulers into government and abolished any attempts of westernization similarly the government distanced itself further from Christian missionaries tanku bond koleni tanku se freedom dele tume to but the state is not involved okay the British government is not involved okay so eta hala first answer एटा क्वेश्चन ता पूछले तो चेंजेस कोन से माने आनिले पॉलिसी रे पॉलिसी चेंजेस कोन हला सेकंड जिंस हला ओके ब्रिटिशर्स started to appease one community over the other and it was not always the Muslims को जगह रे से माने हिंदूस को भी सपोर्ट करि छथि सो दैट मुस्लिम्स माने रागिबे आउ को जगह रे से माने मुस्लिम्स को सपोर्ट कर छथि किंतु हिंदूस माने रागिबे सो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ओके सेटा से माने स्टार्ट कले राइट सर एटी हमें सर मोहल्ले मिंटोरो सर सेटा भी ऐड कर परिबा हाँ तारो मैनिफेस्टेशंस बहुत प्रकार रहला ओके कम्युनल इलेक्टोरेट आसिला कम्युनल अवार्ड आसिला ठीक अछि तो आगु जाय कि सेवडा सब हैला and which led to the partition of Bengal and later on the partition of the country ठीक अछि that you can write it led to the dissolution of East India Company ठीक अछि so directly governed by crown okay एगुडा सब टेक्निकल ये that is doctrine of lapse okay that was ended and other administrative changes were made in the executive, legislature and judicial arenas with greater participation of Indians so Indians को बेसी आउ ओके पार्टिसिपेशन नो चांसेस मिलला राइट जेमति कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 एंड इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861 ओके ये तीनटा मन रखिबे तो इंडियन मानको को पार्टिसिपेशन आस्ते आस्ते बढ़िला फर्स्ट द इंपेरियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल ओके लेजिस्लेटिव काउंसिल रे प्रथम हैला तापर इवन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय सेथरे भी इंडियंस मानको इंक्लूड करा हैला आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ओके सर एटी सर जो राजा बनारस एंड महाराजा पटियाला सेटा सर ऐड कर दवा हां जो माने प्रथम ऐड हेतिले ओके तो तांको ना अपन देबे बट आई डोंट थिंक आपन टाइम होबो केना आपन को लिखिबार अछि पॉइंट्स ओके सो इंडियंस हां सर मार्क देखि कि सर लिखिबा हां मार्क आउट टाइम देखि केना हमें जानि थिबा बहुत गुरे जिंस किंतु हमको वी हैव टू कंप्लीट द पेपर एंड प्रॉपर्ली कंप्लीट द पेपर सेति पई रेलेवेंट जिंस होई लिखिबे
जेतिकी से पचारुछि आ जेतिकी आपण लिखि परिबे सेही स्टिपुलेटेड टाइम रे धरतु मु एटा बहुत भलो रे जानछि मु आपको 12 मिनिट जगह रे 15 मिनिट दे देली ता माने कोन मते 3 मिनिट आउ कोटू काटिया पई पड़िबो राइट तो सेटा मु टिके अवॉइड करिबे बुझि पाले सर हेले एठी सर जदि सब क्वेश्चन आसु नथिबो ताहले लेखिले चली पारे मत लागुछि जनरली आपण कना हमर एमपी तो नै कि आउट ऑफ माने प्राय क्वेश्चन सब आपन आसीबो ठीक रे प्रिपेयर जदि करिवे सब क्वेश्चन आसीबो ओके तो सेतरे किछि माने मते लागुनी किछि प्रॉब्लम हो कि मते आसीबोनी क्वेश्चन हां जदि सेमती सिचुएशन आसिला कि मते गोटे क्वेश्चन किछि जणा नै त देयर आर टू अप्रोचेस कि आपण टोटली छाडी देबे क्वेश्चन ता किबा पाखा पाखी जिंस किछि लिखि दे परिबे सेतरे ठीक अछि से अप्रोच रा इंडिविजुअल अप्रोच बहुत जण एंती भाबंती कि काई मु से ब्लफ काई कि मारिबी गोटे इंप्रेशन खराब हो तो सारे छाड़ दियन राइट आउ के जण भाबंती माइनस मार्किंग तो नाही बोधे सर माने माइनस मार्किंग नहीं बट थिंग इज दैट मोर आइडिया नहीं ओके आ मु ताको प्रथम लिखिली तो सेठी गोटे प्रॉब्लम हुए ठीक अछि तो स्पेशली यदि प्रथम क्वेश्चंस रे मु एमती लिखिली कि ताको जणा पड़े मो नॉलेज टिके कम अछि किबा मु ब्लफ करूची ताले गोटे बैड इंप्रेशन हो परे मु बहुत भलो लिखतिले भी से इंप्रेशन टा कैरी करिवे सेते सबले मन रखिबे आपण खाता रे जतो लिखुचंती सेतबेले नंबरिंग करके लिखिया किछ 1 2 3 4 हिसाब रे लिखिया दरकार नै मते क्वेश्चन नंबर 15 टा सबटु भलो रे आछी मु 15 को फर्स्ट लिखिले ओके काना एबे तो सब क्वेश्चंस आसीबार चांसेस कम एबे तो पूरा फुल क्वेश्चंस आछी जदि सब क्वेश्चंस आसुची सेगुडा एका संगे लिखिबे 15 रे ए बी अछि तो मु जोटी 15 लिखिली सेठी ए बी लिखिबी 15 ए रु स्टार्ट कली तापरे 1 2 3 4 7 लिखिबी लास्ट रे 15 बी लिखिबी सेमती हेले से मार्क देबेनी ठीक अछि तो मते 15 क्वेश्चन सबटु भलो रे आछी आई विल स्टार्ट विथ सेमते हेले मार्क देबेनी देबेनी ओके क्लियरली ताको पॉलिसी रे अछि सेटा जदि किछि इंटरनल डिविजन्स अछि लाइक 15 क्वेश्चन रो बिट ए बिट बी अछि आपण जोटी बिट ए लिखचंती सेठी बिट बी लिखिबे आपण नंबर क्वेश्चन नंबर ता ऑप्शनल भी दाले एमटी ए सेम पॉलिसी ओके सर okay so eta hela after the rebellion British recognized the army and brought changes in financial system and administration as well okay so newly recruited from castes herito underutilized by British and so called martial races aguru se mane Sikhs au Gorkhas को बेसी इंपोर्टेंस दोन होतिले बट एबे मैक्सिमम से माने और बहुत गुडे जोटा मार्शल रेसेस रु माने जो माने they come from a history okay of army warfare se mane bahut bhalore janichon okay which were not part of mainstream Indian culture tapare the British increased the ratio of British to Indian soldiers within India right from 1861 Indian artillery was replaced by British units so these were some of the policy changes jota se mane anile okay question 10 is also previous UPSC question the 1857 uprising was the culmination of recurrent big and small local rebellions हैला एटा हैला फोकल पॉइंट तार कि बहुत थरा रिपीट हेछि recurrent big and small local rebellions that had occurred in preceding 100 years of British rule okay ता माने से बेसिकली कोजी 1757 रु 1857 पर्यंत जते अपराइजिंग्स हेछि ओके सब प्रकार प्रेजेंट अपराइजिंग मिलिटरी अपराइजिंग सब प्रकार अपराइजिंग जो हेछि ता विषय रे लेखन ओके एल्यूसिडेट ठीक अछि सो लास्ट 100 इयर्स से कोन हेतिला सो सिविल रिवोल्ट्स भितरे ओके एटा एक्चुअली नेक्स्ट क्लास पे अछि ओके नेक्स्ट क्लास से भी हमें एटा मेजर रिवोल्ट्स ओके सोशल रिफॉर्म्स एगुडा सब नेक्स्ट क्लासेस रे अछि देखि देबे जोटा हमरो वीकली शेड्यूल राइट सो सन्यासी रिवोल्ट बहुत इंपोर्टेंट व्हाई बिकॉज़ आनंद मार्चटा बेसिकली सेव टू इंस्पायर हिच ओके जो टू वंदे मातरम आछि ओके सो सन्यासी rebellion revolts in Midnapur okay and Dalbum this is 1766 to 74 revolts of Momaryas in the Ahom state okay jota ki much part of it is in Assam 1769 then Vijayanagaram 1794 and the civil rebellion in Awadh 1799 the Kuka rebellion 1840 Surat salt agitation 1840 and these are some of the major civil revolts civil revolts माने जोटी common people they have revolted ठीक है common cause of resentment were illegal tax demand and operation by police judiciary and revenue department okay these were the common reasons काहे कि common लोक civilians okay से माने revolt कले तापर आसिला ट्राइबल रिवोल्ट एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स एटा रिपीट हेकी यूपीएससी रे भी आउ
state civil service रे भी okay Excuse so sir, हाँ कौन sir एमिति sir overall पचारले तो चलिबो sir जदि particular गोटे question पचार दो जेमति कि tribal revolt sir revolt no जदि sir no sir write about coal of Chotan Nagpur तो सेटा आइडिया बहुत कम थिबो सेठी सर कोन करिया सेटा देखिए ना पचारिबार चांस कम अछि नहीं पचारि पारे कहीं पचारिबनी ओके पर्टिकुलर रिवोल्ट्स पई हमें सेत पे तो गोटे क्लास सेत पे रखिछु इंपोर्टेंट रिवोल्ट्स पई थोड़ा इंपोर्टेंट रिवोल्ट्स तारो डिटेल्स आसीबा कथा को कारण पई स्टार्ट हैला रिवोल्ट किए तारो लीडर्स माने थिले आउ फाइनली कोन हैला ठीक अछि एई तीनटा कांसेप्ट आपण ए तीनटा पॉइंट सब रिवोल्ट रो आपण जानिबार अछि ओके को जगह को सेटा स्प्रेड करथिला को जगह रे थिला एतिकी हेले यू कैन राइट ए 10 Yes, sir. मार्क ठीक अछि Yes, दिस sir. 3-4 पॉइंट्स फॉर एवरी रिवोल्ट आपण जो निजरो शॉर्ट नोट्स बनाउछथि निजर पर्सनल नोट आपको बनाया पे पड़ो एगुड़ा मुझे पीडीएफ कर दे दूसरी मैंने ये आपको नोट होगा मोटे नुह रिविजन एमती 1000 पेज जो सर 6-7 मास ओके तो सेटा तो आम रिवाइज कर पार ना आपण को पर्सनल नोट रे यू हैव टू जस्ट जोड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट्स पॉइंट वाइज लिखिबार अछि ओके जोड़ा कि आपण को इजी हो रिविजन बेले ठीक अछि तारो गोटे आपण नै परिबे एनी स्टैंडर्ड बुक कि एई जो नोट रो कंपाइलेशन एगुड़ा जो दिया हबो that you can take as a reference but सेटा total that should not be a note as such okay so next asila tribal revolt so these are major tribal revolts you know okay chuar uprising okay coals right so ऐसे कौन लोग जी ना basically who was the leader okay तुम कहली तीनटा पॉइंट मन रखिबे को एरिया रे हेतिला किए लीडर थिला कोन पय हेतिला आ तार फाइनली कोन हैला चारिटा 300 मन रखिबार अछि okay so the Kond uprising of Odisha right then Santhal uprising Bhils okay and the Ramoshi uprising with the western India रे थिला तांकर main reason कोन थिला imposition of forest right act forceful conversion of tribals by Christian missionaries operation by money lenders and zamindars after extension of permanent settlement to tribal areas okay reasons should be आपन को मन रखिबार अछि next peasant revolts okay farmers ହେଲା peasants ହେଲା ताको मेन प्रॉब्लम कोन थिला evictions काहे ना जमींदार को तो आपण सब राइट दे देले बेसी राइट दे देले तो सी ताको भलो रे एक्सप्लॉइट कला increase in rents of the land and money lenders greedy ways okay and their demand for occupancy rights for peasants so the pagal panthis of Bengal okay then the Pharaisi revolt okay then the Mopla uprising recently ebe news रे भी थिला ठीक अछि पाइको रिवोल्ट राइट एंड अगेन द कॉमन कॉज से प्रथमे देछि कॉमन कॉज कोन थिला ए जो पेजेंट रिवोल्ट्स रो एक्सॉर्बिटेंट डिमांड ऑफ लैंड रेवेन्यू ओके बॉडी ही चल थिला राइट अब काई की तरह गोटे रीजन थिला कि से मिडलमैन भी बॉडी चल अपन ओके ऑपरेशन ऑफ ऑफिशियल्स एंड फ्रीक्वेंट ऑकरेंस ऑफ ड्रॉट एंड फेमाइन तो ता पॉलिसी भी ता पे भलो न थिला ओके तापर आसिला प्रिंसली स्टेट रिवोल्ट so some kings and you know royalty they also rebelled against the British कोन पई ना तांकर से जो डिफरेंट प्रीटेक्स्ट रे आंको जागा नहीं गले आंकर रॉयल्टी आंकर यू नो राज सिंहासन नहीं गले तो सेटा तांकर प्रॉब्लम थिला जेमति कहउतिले अवध रे हला ओके सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंस्टेंस ऑफ मैसूर ओके 1831 तो सेटा भी शेयर थिला लेटर ऑन इट वाज रिस्टोर्ड जो एबे तांकर अछंती जो माने कोन वुडियर डायनेस्टी ओके काहे की न्यूज रे थिला रिसेंटली ए गवर्नमेंट को गला ना जो टीपू एक्सप्रेस गोटे थिला से टीपू एक्सप्रेस को चेंज करी की वुडियर एक्सप्रेस ओके ताको ना दे देतला रिसेंटली तो झांसी रे अवध रे ओके दे ऑल रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स सो दीज आर प्रिंसली स्टेट रिवोल्ट्स राइट सो ए सबुडा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवोल्ट्स ओके आ से 100 इयर्स रो कहि तेनु सेटा एथरे आउ किछि एंति नै धरन मु ताको देखिली ता कॉज कोन ये कोन मते किछि लिखिबार नै सो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली ओके सो एटा यूपीएससी रा क्वेश्चन थिला नेक्स्ट वी कम टू हमरो करंट अफेयर्स रा क्वेश्चन एबे अपन जानछथि तंकर ब्राजील रे इलेक्शन होछि ओके शॉर्ट नोट ऑन इंडियन ब्राजील रिलेशंस ओके एटा अक्टोबर 30 रे अछि तो ब्रिक्स रा तो सेटा पार्ट प्लस आस्ते आस्ते हम रिलेशनशिप डेवलप होछि काहे ना वी आर आल्सो इमर्जिंग इकोनॉमी से माने भी गोटे इमर्जिंग इकोनॉमी ओके हिस्टोरिकल लिंक कोन कोन हिस्टोरिकल लिंक अछि इंडिया और ब्राजील भितर ओके almost 5 centuries old so Portugal's okay Pedro Alvarez okay on his way to India was blown of course and only to discover Brazil 1500 right okay
During the Cold War, India and Brazil calibrated against the world order dictated by superpowers. For example, in 1967, both the countries condemned the creation of idea of creating NPT. Okay. तापरे political cooperation जदि देखिबा एबेका भितरे last 20 years रा strategic partnership established in 2006 between Brazil and India has deepened, with both countries cooperating closely within BRICS. IPSA तो एगुडा तो मर्ज हे जे जेबे सेमिति कय गले बहुत IPSA and BRICS, okay, G4 and G20, okay, and in the wider multilateral context of UN. आउ कोन हमरो cooperation रहिछि तांको संगरे Brazil and India along with Germany and Japan jointly pursued aspirations of permanent seats in UN Security Council. So UN reforms re bhi, okay, we are partners, right, and work towards multipolar world where large developing countries can frame global rules and democratize international institutions. ebe jo khali jo manako permanent jo mane UNSC ro members achandi semane jaicha korchanti a both time re seta world peace by problematic. For example, you see what China is doing, okay, semane jo mane terrorist recently sir China block कर देछि इंडिया रा से टेररिस्ट मानकु जोटा कि से तांको हेल्प करचंती, ओके, तांको डायरेक्टली हेल्प करचंती इन द सेंस कि से पाकिस्तान रो सांग तेनु से मान ताको ब्लॉक करिके रखछन. ओके, अदर कंट्रीज आर सफरिंग फ्रॉम दैट काना से माने निज देश भितरु काको पसिया पे देबेनी. द वे दे आर ट्रीटिंग देयर माइनॉरिटीज स्पेशली इन जिंगजियांग प्रोविंस, ताकर जो मुस्लिम माइनॉरिटी अछि सेठी जिंगजियांग प्रोविंस रे तांको से माने बहुत ही खराब रे ट्रीट करचनी. बट से न्यूज़ से माने बाहर को जिया पे ही दियंती कोन हैला ताको देश रे नो वन नोस. ओके, सो both countries played a pivotal role as leader of global south or south cooperation. Okay, तो global south माने जो माने developing countries अछनी तांको आपण south हिसाब रे, okay, north south cooperation माने developed and developing countries with cooperation. South एठी जति कोछि से it's basically developing countries with cooperation बिसरे कोछि. Okay, these are some terminologies which you will study in international relations. Brazilian foreign policy of reciprocal multilateralism is in concurrence with India's policy of strategic autonomy. Okay, ये दिटा important. Reciprocal multilateralism, आमे गोटे कंट्री को हेल्प करचू, ता संगे बिजनेस करचू, ता संगे ट्रेड रिलेशन बढ़ेलु, ता संगे डिप्लोमेटिक रिलेशन बढ़ेलु, मिलिटरी टाइज बढ़ेलु, सी भी हम संगे शेयर करिबार अछि. ओके, इंडिया चाइना बढ़िया हमर एंती ट्रेड डेफिसिट से टाइप रो एंती जिंसो हबा कथा नो. देन रेसिप्रोकल मल्टीलैटरलिज्म और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो दिटा टर्म कहली ता मानेटा कोन. ओके, reciprocal multilateralism माने the rule of multilateral order should benefit all nations. Okay, तो से disparity टा रहबा कथा नो कि गोटे बहुत बेनिफिट को जेंदी चाइना और आमे बेसी बेनिफिट कर परनु तांको संगे ट्रेड and not being merely dictated by superpowers for their benefit. Strategic autonomy कोन, it denotes the ability of a state to pursue its national interest. Okay, US जते कहले एटू तेल नियो सेटू तेल नियो नि भाई हमरो रशिया रु तेल दरकार हम रशिया रु तेल नेलु. ओके, सी तापरे जा भी करू सी एबे पाकिस्तान को F-16 की ताको अपग्रेड करिया पे पैसा दे देला, से तो अपग्रेड करबनी से बेसिकली टेररिज्म रे लगाइबो. ओके, तापरे एबे फैक्टर ऑफ ग्लेयर इज टू पाकिस्तान उठी गला विदाउट द सैंक्शन ऑफ विदाउट द US. ओके, सेटा न चाहिले सेटा ही न तांदा. So now the funds will come from different parts, Turkey ru asibo, Saudi Arabia ru asibo. Okay, जोठी जो से वहां भी कल्टा अछि तो से माने पैसा पुनी पटेबे. ओके, आ पुनी प्रॉब्लम स्टार्ट हबो, राइट. सो एटा गोटे इनडायरेक्ट मेसेज टू इंडिया आपण कहि परबे यूएस रो, राइट. सो it adopts and preferred foreign policy without being constrained in any manner by other states. So India be amaro foreign minister तांको tone and tenor पूरा अलगा. आगु amaro foreign ministers माने माने से माने बहुत कम कहउतिले और बहुत आस्ते कहउतिले. ये पूरा डायरेक्टली मोरे कहउचंदी जाको भल लागुची लागु, जाको भल न लागुची न लागु. ओके, जोटा एक्चुअल कथा, राइट. तापर आसिला इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन अस. Brazil has become one of the most important trading partners of India in entire LAC. Okay, LAC kono line of actual control with China no, Latin America and Caribbean region. Okay, so however bilateral trade between two countries stands as dismal $8 billion. So eta बढ़ेबार अछि. Okay, in 2018 Indian investment in Brazil were around 6 billion and Brazilian investment in India around 1 billion. तो बहुत ही कम आस्ते आस्ते बढ़ोछु. आ कोउडा हमरो बिजनेस रो मेनस्टे अछि. Main item of exports from India to Brazil are diesel, organic chemicals and pharmaceutical products, man-made filaments,
nuclear reactors, boilers, machinery, and mechanical appliances, and textile products like synthetic filaments, okay, fibers, cotton, apparels, accessories, etc. Main items of Brazilian export to India were petroleum products, mainly crude oil, cane sugar, copper ore, and soya oil and gold. Okay, so it is economic cooperation. Defense rate. So Sir, we can bilateral. also add the India's aid to Brazil during the COVID situation, the vaccination. Yes, সেটা ଆପଣ add କରିପାରିବେ. Okay, that is COVID diplomacy under ଆପଣ add କରିପାରିବେ, right? So defense cooperation. So ଆମର ଗୋଟେ bilateral defense cooperation agreement 2003 ରେ କରାଯାଇଥିଲା, right? Under the framework of the agreement, joint defense committee has been set up that meets at regular intervals. Cultural cooperation, तो ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମାନେ yoga ଘରିକାକୁ ବି ବହୁତ okay priority ଦେଇଛନ୍ତି, right? Brazil has a strong community of yoga and Ayurveda practitioners. Brazilian Association of Ayurveda is a non-profit organization with offices in 9 states of Brazil and has members all over Brazil. Okay, जो soft power ଆମର ଅଛି ସେଟା ଏଠି represent ହେଉଛି. Mahatma Gandhi is highly regarded in Brazil, and the government and NGOs are trying to inculcate the philosophy of non-violence among youth and okay police. ତାଙ୍କର ସେଠି problem ଅଛି କ'ଣ ବ୍ରାଜିଲ ରେ, so entire South America ରେ ସେୟା Latin America ରେ ତାଙ୍କର drug culture, okay, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ problem ତାଙ୍କର ସେଠି. Okay, so what are the challenges? Relationship between India and Brazil have majorly remained stable. Okay, however, some minor issues have emerged lately. ଏବେ କ'ଣ Brazil has filed a complaint at the WTO against New Delhi's subsidy to sugarcane farmers. କାହିଁକି ସେମାନେ sugarcane ପାଇଁ ତାଙ୍କ problem ହେଉଛି? କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସେଇଟା ଆମକୁ export କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି? Main items of Brazilian exports to India, cane sugar. ତ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆମର okay subsidy ଦିଆ ହେଉଛି ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ବେଟର ପ୍ରାଇସ୍ ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଣୁଛି sugarcane କୁ, ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି. Brazil is the largest producer and exporter of sugar and claims Indian subsidies are inconsistent with global trade rules. Okay, जो अपन different color of subsidies ଅଛି, blue box, amber box, okay, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ନା ଏଇଟା ହବା କଥା ନୁହଁ. Brazil already counts China as its #1 trade partner. India is facing difficulty to compete with deep pockets of China. तो ଏଇଟା ଖାଲି ब्राजिल संगे नुह, बहुत गुडे लैटिन अमेरिकन, कैरेबियन और अफ्रिकन कंट्रीज संगे सेम प्रॉब्लम हमर रहउची. आमे ताको भाई किछुटे भलो करिया पे हेले भी से माने चाइना को छाडी परिबेनी, कारण चाइना एते वर्ष होला सेठी पूरा ता रूट्स लगै सच, स्पेशली अफ्रीका. ओके, though BRICS as a group has tremendous potential to grow, it has also received criticism for not having a common vision. ठीक है. So India and Brazil have developed divergence on climate change cooperation, as India is committed to combating global warming while Brazil has rejected scientific studies on climate change. Okay, तो सेठी आपण देखिले तांकर एनवायरनमेंट बेले तांकर जो प्रेसिडेंट थिले, okay, he was instrumental in burning lot of बहुत गुडे आपनकर रेन फॉरेस्ट रो, ओके, ताको डिस्ट्रॉय करिकि से किछि सेठी चाहुतले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और से सब जिंस करिया पे बहुत क्रिटिसिज्म हला सेति पई ताको, राइट? सो एटा गोटे मेजर प्रॉब्लम गोटे रहउची. वेरस इंडिया इज कमिटेड, आमे हमरो फॉरेस्ट टोटल फॉरेस्ट एरिया जोडा बढ़ौछु से जिंसटा, ओके, ब्राजिल रो स्पेशली अंडर बोल्सोनारो से जिंसटा टिके प्रॉब्लम थिला तांगर. नेक्स्ट वे फॉरवर्ड आगु कोन करिया रहउची. So in 2020, the Brazilian ambassador agreed with Indian government's position that 2019 Citizenship Amendment Act's implementation and revocation of Jammu and Kashmir special status were domestic matters for India. Similarly, we are concerned more most of the Latin American and European countries. Okay, India would benefit highly from successful ethanol substitution programs of Brazil to implement green energy and reduce pollution. So एटा गोटे बहुत बड़ा एरिया जेमति कि आम गवर्नमेंट एबे एथेनॉल सब्स्टिट्यूशन आस्ते आस्ते बढ़ौछ, जोटा कि ए जो यूएस हो कि सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो, तांको पे गोटे बड़ा प्रॉब्लम. ओके, कारण जेते हमें एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ेबा से हिसाब रे एनवायरनमेंट पे भी भलो, हमरो डिपेंडेंस, ओके, हमरो करंट अकाउंट डेफिसिट करिका से गुडा भी ओके प्रॉपर्ली मैनेज हे परिबो, कारण तेल तो हमें प्राइस सब किनुछु, इंपोर्ट करछु. India and Brazil share the stage at various global forums, which is a sign of healthy and advantageous relations. Okay, सर वो डाउट थला. हां कोन सर जो इथेनॉल सब्स्टिट्यूशन प्रोग्राम सेटा ब्राजील इंडिजिनियस ना यूरोपियन टेक्नोलॉजी सेटा ना इंडिजिनस नो, बेसिकली से माने कोन करचंदी, दे आर काइंड ऑफ लीडर्स इन दैट टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो जस्ट लाइक इंडिया
तांको पाखरे भी तेल एमती बहुत नहीं ठीक अछि तो से माने तांकर एथनॉल ब्लेंडिंग टा बहुत जगह रे होची एबे ओके यूरोप रे तो निहाती भाबरे होची कना से माने डिपेंडेंट रहउचंती अलगा कंट्रीज ऊपर रशिया ऊपर हे गला कि आउ का ऊपर हे गला तांकर एनर्जी पे तो तांको भी सेटा इट इज क्वाइट नेसेसरी फॉर देम ओके आमे इंडिजिनसली ही करूछु हमरो इंडिजिनसली करूछु बट वी कैन ऑलवेज ओके टेक हेल्प बिकॉज ना सर टेक्नोलॉजी शेयरिंग जोड़ा टेक्नोलॉजी शेयरिंग तांकर टेक्नोलॉजी हम टिके बेटर अछि केना से माने हमठु आगुरु स्टार्ट करचंदी एटा ओके Okay, so various global forums which is a healthy sign and advantageous relation that can be used to address challenges of climate change education poverty and so forth but a climate change bisare tikke amaro divergence of view अछि the growing relations between India and Brazil share similar values regarding liberal strategies global governance and human rights which are crucial for global balance of power general jinso so basically ame kisita common value share koruchu okay both are emerging economies okay and semane भी लैटिन अमेरिका रो कहब गले semane गोटे बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी है कि ओके इमर्ज करूचंती तो हमर जो छोट छोट असुविधा अछि हम भितरे ताको रिजॉल्व करके वी हैव टू कैरी ऑन मेनली विथ ट्रेडिंग रिलेशंस ओके राइट सो मुझे कहते असाइनमेंट कथा सो काली पाई दीटा क्वेश्चन आपन को रेडी करिवार अछि कोन कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन लीडर्स इन रिवोल्ट ऑफ 1857 तो दीटा तो आपन जानचंती ता परे आउ कोन होई पारि ओके अदर लीडर्स आर आल्सो देयर ओके स्मॉलर रीजनल लीडर्स आर देयर ओडिसा रो जदी काकू पाइबे सेतरा ऐड करिवे so I will be telling you around 5 or 6 leaders tomorrow okay तापरे contribution of leaders from Odisha in the revolt of 1857 तो 1857 ओडिसा रो लीडर्स मानकर को रोल थिला मेन वुमेन सबु तो सेतरे टिके ट्राई करिवे जदी ट्राइबल लीडर्स एंड अदर सबु एस्पेक्ट सबु सोसाइटी रो सबु पार्ट्स को आपण रिप्रेजेंट करि परिबे जदी ओके दीस टू आर द क्वेश्चंस फॉर यू ताकू काली दिन सारा देखिबे ओके एंड वी विल डिस्कस दैट सो नाउ लेट अस कम टू writing the answer ठीक है we'll write one answer आज प्रथम तो one live answer we'll write I'll give you 5 minutes to okay write the answer 5 minutes to go through and then you can write the answer okay we will concentrate on significance of revolt of 1857 so take down the question discuss the significance of the revolt of 1857 discuss the significance of the revolt of 1857 in the Indian freedom struggle in the Indian freedom struggle ओके तो एटा मु स्क्रीन रे आंसर टा रखी छी यू कैन रीड इट वंस ठीक अछि 5 मिनिट नियंतु रीड करिया पे सो इट इज 11:26 नाउ ओके एंड 6 मिनिट्स रे एटा लिखिया होता 10 मार्क रो क्वेश्चन ओके सो आई विल स्विच ऑफ माय माइक नाउ ओके यू टेक 5 मिनिट्स टू स्टडी भाबंतु आउ कोन पॉइंट अपन ऐड आउ गोटे अछि तळे एटा हिंदू मुस्लिम यूनिटी फैक्टर okay let me see if I can सर कौन सर क्वेश्चन टा आउतर सर मैंने गुट्टे ये रहा जो तो ये पूरा आंसर टा रहला क्वेश्चन हैला significance or importance of revolt of 1857 in India's freedom struggle okay so 11:40 ठीक अछि पर्यंत आपन को टाइम अछि आपन ताको लेखंदु एंड यू सबमिट इट ताको गोटे पीडीएफ कर देबे ओके आउ मते व्हाट्सएप करिवे यू नो माय नंबर 9437002210 जो माने 11:40 भीतर व्हाट्सएप करते मु एबे चेक कर देबी जो माने एबे कर पर नांती परे करी की पठे देले मु तो आपन को पर्सनली पठे देबी ओके
ओके बट गोटे पीडीएफ ओके डोंट सेंड लाइक इमेज करके पठेबे ओके तो पीडीएफ करी पठेबे सो दैट मु इमीडिएटली चेक कर देबी नाटा खाली लिखि देबे आपण खाता ओके सो आई विल स्टॉप माय माइक नाउ I will again come back at 11:40 ओके तमने आपण को मिलला 12 minutes ठीक अछि
Okay, I hope all of you have almost finished writing. जो मैंने मते पठे सारछंदी मु तांकर एनालाइज करछि जो मैंने ता भितर लेखिकी पठाउछंदी ओके आउट 20 minutes let's say you can send within that otherwise अपन जेतले सारिबे पठेले मु ताको करेक्शन कर देबी okay so let us start first sagar so okay significance of 1857 revolt in Indian freedom struggle correct exposure of drawbacks okay ठीक अछि so जहाँ सब हमरो issues थिला जोड़ा changes करिवार थिला okay drawbacks okay so एटा ब्रिटिश साइड रे आपण लिखिछंदी it's fine effort to win over the confidence of Indians okay but again from the British side beginning of the new era okay so 10 marks fine maybe अपन को केते टाइम रे अपन लिखिले सेटा अवश्य that we need to see but some more content can be added सबले मन रखिबे आमे एटले पॉइंट वाइज लिखु जो गोटे इश्यू हैला सपोज आमे हिंदू मुस्लिम यूनिटी खाली लिखिलु ओके ताको टिके जदि आमे एटा को गोटे सब हेडिंग नै कि पूरा लिखि परनु ताले एटलीस्ट सेंटेंस रा एतिकी बडो करिबा जोतरे रीजनिंग ता भी ता संगरे पळेबो खाली हिंदू मुस्लिम यूनिटी लिखिले ठीक अछि तो कांसेप्ट हमको जना पड़ जाउछ बट हमको टिके एक्सप्लेनेशन भीतर करिया पे पड़ियो ओके 6 मिनट रे सर जा टाइम हला सर जति 6 मिनिट भीतर अपन लिखिलो ओके देन इट इज फाइन ओके सो कहना टाइम भीतर लिखिबाटा बहुत इंपोर्टेंट हमको जदी टाइम मिलिबो तो हमें और भी यू नो लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन अलगा जिंस भी हम बहुत कुछ लिखि परिबो ओके बट वी हैव टू स्टिक टू द टाइम सेटा हला दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट ओके फाइन नेक्स्ट सत्यजीत सत्यजीत अपना ये यू राइट यू नो से जो हमर रूल्ड कॉपीटा यूज करंतु ओपीएससी रो से टाइप रो ओके हां सेटा ଆଜ୍ଞା ସାର୍ that you can use तो सेटा बेटर होगा ना परीक्षा तो से तरह अपन लिखियो ना ओके तो एटा अपन फर्स्ट पॉइंट ठीक अछि most significant result of uprising was end of the okay rule of EIC सबले मन रखिए एक्रोनिम्स यूज करिवार जनरल रूल टा हैला प्रथम जतले अपन ओटा एक्रोनिम यूज करछनी फर्स्ट इंस्टेंस रे तार अपन लिखिबे तार ओके ईस्ट इंडिया कंपनी फुल फॉर्म हां फुल फॉर्म टा फर्स्ट लिखिबे तापर अपन से एक्रोनिम टा यूज कर परिबे जेथर यूज करिबे ओके आ गोटे कथा इंपोर्टेंट फ्रेज उडा कीवर्ड्स उडा टिके अंडरलाइन कर देबे ओके अच्छा end of rule of EIC okay and ଆଜ୍ଞା okay colonial government ठीक अछि educated Indian did not believe violence with the uh,
ओके ठीक अछि किछि यू कंटिन्यू राइटिंग ओके लेखंतु सो इट्स अ गुड बिगिनिंग हां ए जो छोट छोट एरर्स होची लेट्स से 1 मंथ की 2 मंथ अपन सब दिन लेखुचंदी तले एटा ठीक ठीक हे जिवो ओके बट स्टिल देन कंटेंट आउरी इंप्रूव हबो ओके पीडीएफ टा मिलला पर टिके देखि देबे तार मॉडल आंसर टा ओके बट दिस इज मोर इंपोर्टेंट यू हैव टू राइट लिखिले आस्ते आस्ते जिनसोडा यू नो अपना एग्जाम ओरिएंटेड आउरी हे जिवो ओके फाइन फाइन बाकी ऑलरेडी अपना टाइम भीतर लिखंतु ओके सेटा दैट इज वेरी इंपोर्टेंट आई एम वेटिंग फॉर अदर्स दी जण ही खाली लिखि जंदी ओके व्हाट अबाउट अदर्स ओके आई विल वेट फॉर 15 मिनिट्स मोर ओके 12 o'clock भीतर जो मैंने दोचंदी मु सेटा करेक्ट कर देबी बाकी आपण लिखि के पढै परिबे ओके यू कैन राइट एंड सेंड इट टू मी मु ताको परे देखि देबी ओके ट्राई टू राइट इट लाइव रे लिखि देले बेटर कोन ना आपणकर ओके आपण जानि भी परिबे एटा आ प्रैक्टिस टा एटलीस्ट वन क्वेश्चन ए डे लाइव राइटिंग रो आपण प्रैक्टिस करबो सर मार्क केते कहो सर एटा 10 मार्क क्वेश्चन टा ओके आपण को अराउंड से 6 खंडे मिलिबो एंड सत्यजीत you will get around 5 okay out of 10 थैंक यू सर एटा हमर बिगिनिंग से जस्ट स्टार्ट करूची हाँ सेटा ही इंपोर्टेंट ना यू नीड टू स्टार्ट एंड यू नीड टू रिटेन गोटे आंसर लिखंतु सब दिन किछि प्रॉब्लम नहीं बट सेटा अपन लिखिबार अछि ओके मु एंती कोन कि एबेठु अपन 3-4 घंटा बसी लिखंतु राइट गोटे भी आंसर लिखंतु यू नो हमर हैंडराइटिंग ता सर टिके डोंट वरी अबाउट हैंडराइटिंग देखो हैंडराइटिंग गोटे जिंस एटा एबे फॉर्म हे सर हमें सेट पे कि हमें कॉन्शियस हेले हमें चेक करी माने ताको कोन करबे हमें आपण दि जण का हैंडराइटिंग कार भी प्रॉब्लम नहीं हैंडराइटिंग ता लेजिबल होबा कथा जे खाता करेक्शन करछि से चिनी पारिया दरकार ओके जानि पारिया दरकार कोनटा लिखाइ छ हम तो प्रीवियस ईयर रो जो माने सब देखि चंदी टॉपर्स करो आपण जदि देखिबे हैंडराइटिंग तो इवन बहुत भलो भलो रैंक जो माने यूपीएससी हो कि यूपीएससी हो रखि जंदी तांको हैंडराइटिंग एमती से बहुत ही भलो भी हमें कहि परिबानी पढी हे परथिबो जणक हैंडराइटिंग यदि पढी होनी ताले सेटा गोटे मेजर इशू बट सेमती जहार थिबो मु कहिबी ताको ओके सो डोंट वरी अबाउट हैंडराइटिंग कैन नॉट बी चेंज्ड अपन जदि कॉन्शियसली किछि एफर्ट भी करिवे चेंज करिया पे इट विल हैव एन इफेक्ट ऑन योर राइटिंग स्पीड ओके जोटा कि हमको बहुत प्रॉब्लम है जो हमको ओके ओके सर okay so let me just wait for some time and otherwise after the class you can send me मु करेक्ट करी के आपन पठे देबी ओके काली रो जानचंती काली रो जोटा what we will be discussing tomorrow okay schedule रे सेटा देखि देबे तो एटा हला ए वीक रो शेड्यूल सो काली हला पॉलिटी रे हम देखबा सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अछि आ ऊपर बहुत क्वेश्चंस पड़ी छी यूपीएससी रे भी ओपीएससी रे भी ता भीतर हमें किछटा you know we'll see some previous year questions also some important questions 10-12 क्वेश्चन देखिबा एंड जो आज असाइनमेंट देली दीटा असाइनमेंट जोटा देबी सेटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओके तो सेटा टिके आपण ठीक रे पढिबार अछि राइट ओके फाइन सर तमने सर लक्ष्मीकांत बुक रो फर्स्ट पार्ट ता सेलिएंट फीचर्स हमें एक्चुअली कोन हमें कवर टू कवर तो पढिबा दरकार नहीं ता भितरु जोड़ा एग्जाम स्पेसिफिक इंपोर्टेंट जिंस सेटा हमको पढिबार अछि ठीक अछि तो सेलिएंट फीचर्स रो हमें ताको स्टार्ट करू सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके ओके सर ओके फाइन सो विल स्टॉप हियर सो आपनकर दीटा काम रहला फर्स्ट हला कि काली पई असाइनमेंट ता एटा बहुत इंपोर्टेंट एटा एबेडू आपण ताको रिसर्च करिवे करंतु ए जो दीटा क्वेश्चन दिया आइची ओके starting of the class tomorrow first I discuss this women leaders in revolt of 1857 चेष्टा करंतु ओडिसा रु women leader काहू जदी रखि परिवे नंबर 1 सेकंड हला leaders from ओडिसा ओके वुमेन हंतु मेन हंतु आउ डिफरेंट कैटेगरीज रो अपन जदी दे परिवे बहुत भलो हबो पोएट्स लिटरेरी फिगर्स ओके किंग्स ओके तापरे यस सर common सर जेंती people एग्जांपल हमरो एथरो वर्तमान ओपीएससी प्रीलिम रो क्वेश्चन पड़तला जेंती सर राजा रवि वर्मा से पेंटिंग थ्रू रे वुमेन मानको को एम्पावरमेंट करतले तो ठीक सही बढ़िया एग्जांपल बेसी देखले भलो हो डायनामिक बढ़ियो हाँ आपणकर ओडिसा रे बहुत गुडे एग्जांपल मिलिबो द लॉट ऑफ जमींदार से संबलपुर एरिया रे ओके
बहुत गुड़े जमींदार थे जे वीर सुरेंद्र साई को सपोर्ट करते कि विषय के किसी बेसी जान ना ओके आमको से एस्पेक्ट गुड़ा आपण टिके देखिए ओके अच्छा कोठू पाइबे सोर्स जदि मते पचारिबे ताले जहाँ तो इंटरनेट रु पाइबे आपण ओडिशा रिव्यू जो हमर गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा रा मैगजीन अछि ओडिशा रिव्यू साइट को जाइकी सेटा गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा रा साइट रे थाए सेठी जाइकी आपण और मु भाबुची आईसीएस स्किल समस्त भल अछि आईसीएस कोन कि कहि परिबे आईसीएस स्किल्स तार भल थिबो से बहुत कम टाइम रे रेलेवेंट जिंस पाइबो और से प्रॉपर्ली पढ़ी पारिबो नहले कोन हमर एबे इन्फॉर्मेशन ओवरलोड अछि बहुत जिंस हम पाकर अछि किंतु ता भितर कोटा इंपोर्टेंट सेटा हमें ओके बहुत टाइम लागि जो बाहर करा पे आईसीएस हला इंफॉर्मेशन सर्च एंड एनालिसिस स्किल्स ओके इंफॉर्मेशन सर्च एंड एनालिसिस स्किल्स गूगल रो कोनटा देखिबा तो देखिबे ओडिशा रिव्यू मारिबे ओके तापरे से हमर 1857 ओके लीडर्स ओके और हीरोज फ्रॉम ओडिशा ए टाइप रो किछि आपण मारिकी देखिबे तो आपण को पीडीएफ आर्टिकल्स मिल जिवो ओडिशा रिव्यू रो से थ्रू आपण यू कैन पिक अप ओके आ किबा ओडिशा हिस्ट्री बुक्स रू भी आपण बार कर परिबे हरिहर पंडा साहब को हो कि अलगा को जो भी बुक आपण फॉलो करछन ओके सो सेटा देखिकी दीटा जाक रेडी करिकी थिबे तो सेथरे कोन आपण टिके लैटरल रीडिंग भी बढ़िबो आ यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर नॉर्मली भी गोटे अलग किछि क्वेश्चन पढ़ले ओके हमें ए हीरोज मानकर ना मेंशन करि परिबा ओके सो आई विल स्टॉप हियर जो माने कंप्लीट करूचंदी बाकी मते पठे दियंत आई विल सेंड यू ए वॉइस नोट ओके आफ्टर करेक्टिंग योर आंसर्स राइट फाइन सो विल स्टॉप हियर देन